Hello, hello, hello. Welcome back to Almighty Blues FC, a fan channel for all to see. और यस यार, फुटबॉल खत्म नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती। और इसलिए हम आते रहते बिकॉज यस, द क्लब फुटबॉल सीजन इज ओवर। लेकिन जैसे मैंने बोला था कल, फॉर पीपल आउट देयर हु आर लिविंग अंडर अ रॉक, इंटरनेशनल फुटबॉल का साल है, प्रॉपर इंटरनेशनल फुटबॉल का साल है। और ये वार्म अप उससे बेटर नहीं हो सकता था व्हेन यू हैव ऑफ कोर्स द यूरो चैंपियंस प्लेइंग अगेंस्ट कॉन्मेबॉल कोपा अमेरिका चैंपियंस। मस्त रहेगा। फिनलिस्मा वो ही नहीं, हाउ डू यू प्रोनाउंस दैट, फिनलिस्मा फाइनलिस्मा जो भी करे यार, इट इज अ ब्रिलियंट गेम टू वॉच। लेकिन उतना ही नहीं, वी आर हैविंग, याद है किसी को, वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन पेंडिंग है अभी भी। आई थिंक 3 स्पॉट्स बाकी है इन द कतार वर्ल्ड कप। उसके लिए मुक्तेश हम हमारे साथ ज्वाइन करने वाले हैं जस्ट अ फ्यू मिनट्स। लेकिन as I say that, let's actually like the stream because उतना ही नहीं, we also have Nations League for those of you जो interested है। come on, like KDB ने बोला है, of course, with basically you have uh, Nations League as glorified friendlies। पता नहीं, मेरे लिए यार इंटरेस्टिंग है because there's a lot of competition, काफी अच्छे टीम्स खेलने वाले एंड यार आपके बेस्ट फुटबॉलर्स मिलेंगे। दैट इज व्हाट वी वेट फॉर द एंटायर ईयर। आई थिंक इंटरनेशनल फुटबॉल एक स्ट्रेंज वे में बहुत ही काइंड ऑफ एक्साइटमेंट लाती है, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ नॉकआउट ना। हर एक गेम एक नॉकआउट जैसे खेला जाता है और वो एक एक्स्ट्रा पैशन आता है। और टॉकिंग अबाउट पैशन यार, इटली हैज टू बी इन इट कॉन्वर्सेशन में। इटली हैज टू बी बहुत ही इंपॉर्टेंट बिकॉज हाँ, बहुत ही काइंड ऑफ अनफॉर्चुनेट कि इटली नहीं क्वालिफाई की फॉर द वर्ल्ड कप। लेकिन आई थिंक ये फिनलिस्मा जो है, इट विल बी एक मे बी एक अपॉर्चुनिटी इटली को बताने के लिए भाई वो बेसिकली बैड लक था। हम बेसिकली है एग्जिस्ट करने के लिए, लेकिन लियोनेल मेसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वील प्रॉब्ली टॉक अ लॉट। लेकिन यार अगेन मैं देख रहा हूँ करीबन 20 लोग हैं, सब लोग लाइक कर दीजिए और कमेंट करिए। गेट इन योर प्रेडिक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम फिनलिस्मा, और हम बात करेंगे काफी उसके बारे में एज सून एज वी हैव मुकेश भाई हु जस्ट फिनिशिंग ऑफ अ मीटिंग। लेकिन हाँ, सुगम थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। और हाँ, आपको बेसिकली कमेंट करना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा बिकॉज एवरी सब्सक्रिप्शन हेल्प्स, एवरी कमेंट हेल्प्स, एवरी लाइक हेल्प्स। और चेक आवर कंटेंट या फ्री सब्सक्राइब करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यू विल लव द कंटेंट, मैं इतना गारंटी करता हूँ। ऑन बोथ आवर चैनल्स, हमारे 2 चैनल है, ऑलमाइटी ब्लू एफसी जो आप लोग के बदौलत वापस आया है, बट नॉट जस्ट दैट, वी हैव ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस जहां पर हम काफी ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं। एंड द आइडिया इज ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे फ्यूचर में वील हैव मोर ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल, मोर ऑफ अदर स्पोर्ट्स, और मे बी वॉच अलोंग्स। और ऑलमाइटी ब्लूज एफसी में हम आप we'll have more of panel conversations and what not and previews and reviews। वो प्लान है, लेकिन अभी के लिए we kind of mixing it क्योंकि जब तक सबको पता नहीं, let's do that। सायद इन द हाउस, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए सायद। काफी दिन हो गए आपको देखे हुए। Commiserations again, don't want to remind what it is, Liverpool fan house, but always respect to people who come despite that। Raktim, yes, hello as well, bang yes, subscribe always helps। मरीना ग्रानोस्किया लीविंग चेल्सी, प्रतीक ये क्या अभी अभी का आ रहा है कि यार इज इट, आई थॉट नेक्स्ट ईयर आने वाला है, पता नहीं अभी कुछ आया है, जस्ट डू कंफर्म मी। अगर आप सोर्स बता सके तो ग्रेट है, आई ट्राई एंड शेयर इट इज वेल प्रतीक, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन। लेकिन जहां तक मुझे पता था एंड ऑफ द ईयर तक तो रहेगी, दैट्स व्हाट आई वाज अंडरस्टैंडिंग एनीवे। गुड इवनिंग अंकित भैया, अनिकेत थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। इटली 2 अर्जेंटीना 1 बैंग बोल रहे। लेट्स सी भाई, इटली के लिए मतलब अगेन रिमेंबर, okay, let's actually start with what this is about। हम किस लिए है यहाँ पर, इसलिए क्यों एक्साइटमेंट है। अगेन मतलब I don't need as in someone to discuss, so that's why मैं बोल रहा हूँ अभी के लिए until मुकेश पे आते हैं। तो यार for those of you who do not know, it's basically Euro 2020 चैंपियंस जो है, 2020 चैंपियंस कौन थे, इटली ऑफ कोर्स। आपने थंबनेल में देख लिया है for those of you missed it by chance। लेकिन it was obviously Argentina who broke, I think 28 साल के बाद उन्होंने जीता था। I think कोपा अमेरिका was a big deal for them। बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक इन मेसीज करियर। कोपा अमेरिका के बाद वापस से बेसिकली obviously got बैलन डोर, लेकिन उतना ही नहीं। आई थिंक इट्स इन द लॉन्ग रन, आई थिंक मेसी के लिए काफी फायदेमंद होगा जस्ट एज अ प्लेयर लेगेसी जो बोलते हैं, नॉट दैट उनकी नहीं है, कम ऑन लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। बट द फैक्ट दैट बोथ ऑफ देम आर मीटिंग, और पहली बार नहीं हो रहा है, ये तीसरी बार हो रहा है। फॉर दोज ऑफ यू डू नॉट नो, 1980 आई थिंक 1985 में हुआ था, इफ आई रिमेंबर राइट, 1985 में हुआ था। एंड दैट वाज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, a very good game that I obviously don't remember क्योंकि मैं तो था नहीं उस समय। लेकिन the fact is they had I think France beating Uruguay, और बाद में 8 साल बाद में हुआ अर्जेंटीना ने बीट किया डेनमार्क ऑन पेनल्टी। So I think Argentina already has beaten a team in the final of this kind of competition where UEFA champs and CONMEBOL champs meet।
तो इन अ स्ट्रेंज वे अर्जेंटीना का कुछ है हिस्ट्री विच दे वुड लाइक टू रिपीट, और इटली बिकॉज वो मिस कर रही है वर्ल्ड कप, कम ऑन, दिस कैन बी अ ग्रेट स्टेपिंग स्टोन यार, अगेन सिल्वरवेयर लाना, नॉट जस्ट दैट सिल्वरवेयर, इट्स अबाउट यार मे बी थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन, आई डोंट नो, आप कमेंट करिए, वुड यू लाइक मैंचीनी टू एक्सपेरिमेंट विद द साइड, रॉबर्टो मैंचीनी, क्योंकि यार वो नहीं है वर्ल्ड कप में, बट इट इज अ प्रॉपर ट्रॉफी, इट इज अ प्रॉपर ट्रॉफी, आप देखो यार इतने सालों में खाली 2 बार हुआ है, so there is legacy to it, there is a lot of history to it, maybe for the next few years आप you'll have bragging rights, or would you actually give यार Chiellini के last game में such kind of names जहां पर वो career end कर रहे इटली के साथ, so maybe such people have to play, again comment your playing 11, what do you think, and Argentina के लिए should they change in something in the formation, क्योंकि we are seeing a lot of gap, last match हुआ था I think मार्च में हुआ था, so अभी यार 2.5 महीने के बाद में हो रहा है मैच अर्जेंटीना का, so let's see as in if they change something, because I think form also is something, but Argentina have a 31 game unbeaten streak, 31 games से unbeaten है Argentina, wow, uh, समथिंग हैज टू बी डन यार, स्कलोनी, मैं बोलूंगा भाई, मतलब टैक्टिकली आप बोल सकते हो ही वाजंट देयर अबाउट्स, लेकिन आई थिंक मिडवे थ्रू लास्ट ईयर दिखा कि भाई इसने वापस से एकजुट कर दिया अर्जेंटीना को, प्लेयर्स आर प्लेइंग फॉर द बैज, और वो कोपा अमेरिका टूर्नामेंट क्लियरली शोड, यहाँ पर कुछ और मैं कमेंट्स ले लेता हूँ बाय द टाइम मुकेश भाई जॉइंस एज वेल, though I'm an Argentina fan, I think Italy has an upper hand in this game because this Argentina is not tasted outside South America. Well, let's see. मतलब again 31 games बहुत लंबा समय है. Chances of Spain in World Cup, can De Gea be first choice keeper of Spain? अच्छा, by the way हम World Cup qualification की बात कर रहे हैं आज, लेकिन हाँ we'll come to predictions, जो भी early predictions तो मैंने किया था उसमें यार स्पेन को if I remember right हाँ quarters तक भिजाया था मैं, again it might change based on the form, so let's see, हम वापस से prediction video करेंगे in maybe a few weeks time. My mind says Italy, but heart is based for Chiellini and Messi. Okay, interesting. 2-1 Argentina, अनिकेत बोल रहे हैं, interesting वो भी, लेकिन देखते हैं भाई, मतलब कैसे हो भाई मोहम्मद राफे, बहुत सही एकदम, और अगेन यार लाइक ठोक दो सब लोग, भूलना मत, और सब्सक्राइब करना मत भूलना टू बोथ आवर चैनल्स, certainly helps, and by chance आपने मार्करोनी का नहीं किया यार, by chance please do subscribe to him as well, in case आप भूल जाते हो, मैं काफी दफा देखता हूँ भूल जाता हूँ, that's why I'm kind of asking you. हाँ भाई, was very held up, no problem. Sorry अंकित सर, मैं गलती से चेल्सी वाला न्यूज दे दिया, that is it coming to, अरे कोई नहीं यार, it's not just about you, I got in from many kind of sources, no problem भाई, शुभम होता है, मतलब मैं खुद बिलीव कर लिया था, और big up to बाबा यार, shout out to Rock Baba as well. Hello Ankit bhaiya, RCS, always good to see you. You support Italy na, Shrey? The blue color kind of told that I support Italy. Nahi, actually nahi, I don't support Italy. I like certain players of Italy, I like the passion of Italy, लेकिन nothing against Argentina, nothing for Italy. मैं तो यार proper Netherlands का fan हूँ. I don't know if you can see. That is basically एक Netherlands का, I think 2010 World Cup का Shakira वाला, yes, of course you remember, right? I mean, that song, of course. वो वाला वर्ल्ड कप का जर्सी है, दैट इज आई थिंक द अल्टरनेट जर्सी, रॉबिन का, बाय द वे, नंबर 11. इटली विल गो फुल पावर, दे हैव नथिंग टू लूज. ओके, इंटरेस्टिंग. जिंक्स कर दो. नहीं यार 84. ओके, द ओनली थिंग हेल्ड बैक इटली विल बी देयर इंजरीज, एंड ऑलमोस्ट 4 प्लेयर्स हैव बीन इंजर्ड. यस, आई विल बी कवरिंग दैट एज वेल शायद, एब्सोल्युटली. यहाँ पर मुक्तेश भाई का मैसेज आया मुझे, he is joining just in 2 minutes, तो 2 मिनट रुक जाइए, and we'll have a lot more discussion, and yes, I'll be taking a lot of questions भी, तो अपने questions डालिए about any of the international fixtures, about transfers as well, हम टाइम मिले तो वो भी डिस्कस करेंगे, no problem. So we will be discussing a lot, लेकिन हाँ, if you want to prioritize आपके chats, so there is always a way of prioritize. Let me not repeat that. हम हैं monetize on this channel luckily, but हाँ, in case you can afford. UCL 2024 new format has 2 spots for big teams having bad season. Can United be one of the 2, and can Arsenal be the second one? Danish, आप बोलिए. It'll be interesting, certainly. Possible है, Danish, absolutely. 2-0 Argentina. Okay, it's an official trophy, absolutely. It's an official trophy, so there's no point experimenting at such a stage. बिल्कुल रखते हैं प्रथम. I kind of agree with that, but again, would you actually count it in basically, or maybe, or in a strange way, I would put in the bracket of a Confederations Cup. For people out there who know Confederations Cup क्या है, उस bracket में डालूंगा इस trophy को in terms of importance. लेकिन certainly यार national team के लिए any match is important. Acuna injured in training for Argentina. Oh, is it? That's bad. मैंने तो यार starting line में डाला था Acuna को, तो Tagliafico को आएंगे, I guess, probably. Virati is also doubtful. Yes, Virati is doubtful. Acuna is injured. That's bad. आज goat hat trick incoming.
ओके, हैट्रिक मतलब इटली की डिफेंस भाई इतना इजी नहीं है, आई मस्ट से, लेकिन डेफिनेटली यार वी वुड लव टू सी मेसी हैट्रिक, कम ऑन। लास्ट कपल ऑफ इयर्स ऑफ मेसी, मतलब आई डोंट माइंड नेशनल टीम में, हाँ क्लब लेवल पे थोड़ा सा बिकॉज राइवल हो जाते हैं थोड़ा, लेकिन नेशनल टीम में आई डोंट माइंड सो मच, राइट? हेलो भैया, बकवास नाम है, इंटरेस्टिंग। I genuinely feel Argentina will go for Lo Celso upon Dybala, and he may get sub with Dybala after 60. I agree as well. So I agree definitely. और by the way देखते हैं भाई कितने likes है. I hope we can get up to 100 likes very soon. Certainly it's worth it. Trust me on that. और यहाँ पर देखते हैं भाई, मतलब या मुकेश भाई in a minute he'll be joining. लेकिन coming back to the comments, यहाँ पर और थोड़े comments ले लेते हैं. Italy's mid will be there to watch out. Don't know whom will play. Like मैं शेयर करने वाला हूँ as soon as मुकेश भाई comes. Looking sharp, yeah, Vamsi. By the way, यार, who are watching me after maybe couple of days, it is a new start. Of course, basically season end हुआ है, club season that is, और of course lot of international fixtures to look forward to. थोड़ा busy period वापस से होने वाला है, तो यार भार थोड़ा कम है सर पे. Not just that, as a Chelsea fan, as an AC Milan fan, new times, man, new times. So I would say that that's the reason. कोई नहीं, tomorrow Portugal versus Spain also great, absolutely. कल हम उसके बारे में बात करेंगे hopefully. और थोड़ा नेशंस लीग का काइंड ऑफ बैकड्रॉप देंगे. इटली हैज आल्सो नॉट प्लेड आउटसाइड यूरोप, आई थिंक. अर्जेंटीना इज वेरी स्ट्रांग एंड शुड. मोहम्मद राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट यहाँ पर, और ये मैं लेना चाहूंगा व्यूज ऑफ मुक्तेश भाई सून एज जॉइंस. हेलो अंकित भाई, आज किसको सपोर्ट कर रहे हो? यार आज तो मजे लेने हैं मैच के, बस टू बी वेरी ऑनेस्ट. हाँ, नो कंपेयरिंग, एब्सोल्युटली भाई. अंकित से राइट, always Ankit say right. Let's put it that way. They've already given their everything. Let's just say enjoy. Okay, absolutely. Let's enjoy the football is what I would say. Or talking about enjoying, we have someone whose content I enjoy as in probably the most. I can easily say. यहाँ पर आ गए मुझे भाई can. मैं बहुत बढ़िया भैया. हाउ आर यू? आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग लेट. अरे नो प्रॉब्लम यार. फर्स्ट ऑफ ऑल तबीयत कैसी है? आई नो दैट यू आर अनवेल. आई नो दैट यू स्टिल बीन प्रोड्यूसिंग कंटेंट, तो बिग अप यार. मतलब क्या हाल है अभी? बेटर. गला थोड़ा है इधर उधर, लेकिन आई एम अ लॉट बेटर देन बिफोर. आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल एंड क्लियर. हाँ, मुझे तो है एकदम बिल्कुल यार. आप लोग बोल दीजिए. लेकिन यार मतलब कोई दिक्कत तो बता देना. या परेडेस टू चेल्सी यार, मतलब नहीं लगता मुझे तो. लेकिन हाँ, शुरू करते हैं यार, मतलब क्विकली. मतलब मैंने देखा ही था आपका प्रीव्यू. लेकिन मुक्तेश, लाइक फॉर यू, मतलब फिनालिसिमा मैंने बात की, व्हाट इज फिनालिसिमा एंड ऑल दैट हिस्ट्री थोड़ा कवर कर लिया, ठीक है. लेकिन यार मैंने बोला यार आई वुड कीप इट इन द ब्रैकेट ऑफ इंपॉर्टेंस. ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी नेशनल ट्रॉफी इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, इंटरनेशनल फुटबॉल में. लेकिन मे बी कॉन्फेडरेशंस कप काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस दोगे? मतलब आर यू वन जो बोलोगे यार नहीं यार, इट कम्स इन सो वंस इन सो मेनी इयर्स, पता नहीं फ्यूचर में दे विल प्ले मोर ऑफ इट, और यू आर लाइक नहीं यार इट्स अ ग्लोरीफाइड फ्रेंडली? फिर तो क्या कहते हैं, एक तरीके से इट इज स्कार्सिटी के मामले में वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा प्रेशर हो गया. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे ये सैडली है कुछ चीज़ें कि यू नो इंटरनेट गेट्स टू डिसाइड द वेरी बिग पार्ट ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ एन अवार्ड. सो लाइक सोशल मीडिया बेसिकली, राइट? सोशल मीडिया डिसाइड करती है. मतलब मैच के बाद फॉर एग्जांपल इफ अर्जेंटीना इज नॉट एबल टू विन इट, you might end up seeing post कि this was supposed to be a very big trophy and they bottled it, Messi bottled it. अगर मेसी जीत जाता है, अगर अर्जेंटीना जीत जाती है, you might get to see. मतलब ये है ना कि हर फैन बेस, फिर एक फैन बेस होगा जो कह रहा होगा कि ये ट्रॉफी की इम्पोर्टेंस बहुत थी, यूरो विनर्स, कोपा विनर, तो उसमें अल्टीमेट विनर है ये टीम. दूसरे एंड पे लोग बोलेंगे वही है, वो डिससैटिस्फाइड इटली वर्सेस अर्जेंटीना, मतलब कंटिन्यूइंग द ग्लोरी रन. तो मतलब इट कैन मोमेंटम की बात आ जाती है फॉर अर्जेंटीना, लेकिन इटली के लिए इट्स मोर लाइक जस्ट एक प्राइड की बात होगी बिकॉज दे आर नॉट इन द वर्ल्ड कप, और उनको एक बहाना है काइंड ऑफ अगेन, मतलब फॉर देम टू फील कि ओके वी आर एक्चुअली पॉसिबली विनिंग अ ट्रॉफी. तो देयर इज समथिंग राइडिंग ऑन इट. लेकिन अगेन आई एग्री विद मुक्तेश 100% यार. यहाँ पे जैसे डीसी का कमेंट है, आई थिंक आई विल एग्री विद दैट. Like exactly, हाँ, it's a FIFA Super Cup, simply put. वो मतलब very very well put DC, absolutely. मतलब वही है, maybe आप the fact कि इतने सालों से नहीं हुआ, मतलब clearly है कि UEFA को जरूरत पड़ती है पैसों की, they get some ways of making it. वो reality वही है, ठीक है. लेकिन at the end of the day यार, as football fans,
मतलब प्लेयर्स पर बहुत भारी होता है, मतलब वी हैव नेशंस लीग व्हाट नॉट जिसकी बात करेंगे हम, लेकिन फॉर फैंस यार जितना ज्यादा फुटबॉल उतना अच्छा है, मतलब फॉर मी आई डोंट माइंड इट सिंपली पुट, स्पेशली जब आपको मिल रहा है यार, मेसी है आपका, विराटी तो खैर इंजर्ड है, लेकिन काफी सारे प्लेयर्स है ऑन द पिच, ऑफ कोर्स डी मरिया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अर्जेंटीना जो है, तो काफी सारे प्लेयर्स की बात कर सकते हैं हम, तो वी ऑलवेज लव, लेकिन आई थिंक एक जन जिसके लिए आई थिंक प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम होगा, ये होगा कियलिनी, कियलिनी का लास्ट गेम होने वाला है, मतलब फॉर अर्जेंटीना, फॉर इटली। इटली। लाइक अगेन मतलब मे बी उसका एक परसोना है, हमने देखा था जैसे साका को खींच के ना ले लिया, पिच के अंदर ला दिया था वापस, आई भाई रिमेम्बर दैट वाज दैट यूरोस में, दोज आर दैट सम मीम। थिंग्स। और जो बेसिकली जो टॉस होता है, तो द गाय काइंड ऑफ वो गेम्समैनशिप वाला चीज, तो केलिन का जो काइंड ऑफ रवैया है ना, जस्ट ऑन द पिच, मे बी इट गोज अगेंस्ट हिम, यू वुड से ओवर द इयर्स कि यार हम इन टर्म्स ऑफ लेजेंड्स ऑफ बेसिकली डिफेंस, for some reason I don't see Chiellini being named in that bracket. So is it unfair? Where would you rate Chiellini? Because especially वो आई थिंक Euros जीत गया था. आई थिंक यूरो जीतना वाज नॉट इनफ, क्योंकि एक तो द इम्पोर्टेंस ऑफ ला लीगा एंड ईपीएल इन टुडेज टाइम, अ प्लेयर परफॉर्मिंग इन दीज टू लीग्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पुश पिछले कुछ जमाने जहाँ पे मिलान और इन सब टीम्स के डिफेंडर यूज्ड टू गेट अ लॉट ऑफ प्रेज। लाइक Italy is a league known for its defending style, for its defenders throughout the history. Mm-hmm. We have seen the great defenders of Nesta and Maldini and all these players, Cannavaro, exactly. Cannavaro, all playing in that. But in today's time, I think with the uprise of, क्योंकि तब इटालियन लीग की बात ही कुछ और होती थी. Now with the uprise of La Liga, with the uprise of EPL, I think these things matter a lot. That where has a defender performed throughout his career. I think because of Mm-hmm. that you might not see Chiellini in that bracket. But उसके अलावा I don't really see a issue of people naming him. But I don't think कि हाँ नाम नहीं लिया जाएगा उसका because of this very big issue. हाँ मतलब वही है honestly, लेकिन can we expect a fantastic game today or just another Can I friendly? can I just can I just pick a call? Yes, हाँ हाँ ऑफ right कोर्स here. ऑफ कोर्स, हाँ ये क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, प्लीज प्लीज मुकेश प्लीज। तो आकाश लाइक जैसे हमने बोला ना, सी देखो, दिस इज अ केस जहां पर आप बोलोगे द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रॉफी इज नॉट से एज बिग एज यूरोज वर्ल्ड कप, तो ऐसा नहीं है यार, वो दे विल काइंड ऑफ प्ले फॉर द लाइव्स, मतलब वो वाली बात नहीं आएगी, लेकिन आई थिंक थोड़ा पैशन आएगा बिकॉज इटली है इसमें, मतलब नॉट कि अर्जेंटीना नहीं मोटिवेटेड, ऑफ कोर्स है, they need a lot of momentum क्योंकि 2.5 महीने हो गए from the last international match, तो from Scaloni's point of view बहुत important tactically to continue that momentum, they are on a 31 run unbeaten game run, so I think for them वो momentum काफी important है, इटली के लिए यार एक मौका है just to kind of get that passion back as a team spirit back, क्योंकि इतना ज्यादा disappointment इटली as a footballing nation फिर से I think alternate World Cups में they haven't qualified. So for Italy, it's really important. So I think थोड़ा सा दिखेगा passion, लेकिन again, I think maybe more from Italy than Argentina. ये मेरा personal opinion है. Not that क्योंकि Argentina अपना momentum lose करना चाहेगी. इटली की इम्पोर्टेंस इसलिए है ना क्योंकि वर्ल्ड कप भी नहीं खेल रहे वो लोग, तो इसके लिए काफ़ी सारे प्लेयर्स एंड अ लॉट ऑफ आई डोंट थिंक इवन बोनुcci इज गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. डी लोरेंजो आई डोंट थिंक इज गोइंग टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट वर्ल्ड कप. तो काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं हु विल आर गोइंग टू मिक्स आउट. यू डोंट नो विद व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद देयर मैनेजर. तो ये सारी चीज़ें इज एक्चुअली अ वेरी बिग फैक्टर फॉर इटलीज इम्पोर्टेंस इन दिस फिक्सचर. बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन यार मतलब अगेन टॉकिंग अबाउट बेसिकली द वेन्यू, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, और वही मतलब रीजन वही हम क्यों बोल रहे हैं यार, पैसा की काइंड ऑफ रीजन है, इट्स मोर अबाउट मनी, बिकॉज यार इट्स बीन हेल्ड इन वेम्बली, आप बोल सकते हो अर्जेंटीना ने काफी साउथ अमेरिका में खेला है, इटली ने यूरोप में खेला है, तो इटली को एडवांटेज क्यों, व्हाई प्ले इन वेम्बली, आई नो इट्स इन वेम्बली नॉट इन देयर कंट्री, इट्स इन इंग्लैंड, लेकिन मतलब could they have not done एक बढ़िया मौका हुआ था for maybe fans in India, maybe I'm just putting it out there, as in मतलब मैं तो मतलब नेकी और पूछ पूछ वाला चीज बोल रहा हूँ, लेकिन मज़ा आता है. मुकेश लाइक what do you think about the venue, मतलब again Wembley is like more like an occasion ना, मतलब just for the sake of it. आई थिंक हाँ वो वेम्बली का नाम जो वेम्बली का नाम है ना कि जस्ट फॉर एक स्टारडम वाला जो नाम है वेम्बली हाँ एरिना, द वेम्बली स्टेडियम, आई थिंक उसके वजह से वेम्बली में खिला रहे हैं. देयर इज नो अदर स्पेसिफिक बैकिंग ऑफ दिस बीइंग प्लेइंग इनटू वेम्बली.
राइट, ना ही राइट। कुछ इतनी सिग्निफिकेंस है उसकी वेम्बली में खिलाए जाने की। बिल्कुल, बिल्कुल। यार, व्हाई फीफा डिसकंटिन्यूड कॉन्फेडरेशन कप? इट वाज अ टूर्नामेंट वर्जन ऑफ फिनलिस्मा इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगेन ग्रेट क्वेश्चन यार, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे ख्याल से फ्रॉम व्हाट आई रिमेंबर कोविड वाज अ ह्यूज रीजन। मतलब जहां तक मुझे याद है लास्ट रिपोर्ट्स थी। और यू नो इतना सारा बेसिकली कंट्रीज को साथ में लाना इन बेसिकली नॉन नॉन पीक टाइम वुड हैव बीन मोर डिफिकल्ट, और दे कुडंट हैव फोरसीन। तो वो लोग क्या किया, लेट्स हैव फिनलिस्मा इस बार, और देन विल काइंड ऑफ कंटिन्यू अगेन। वो डिपेंड्स ऑन कैसा रिएक्शन होता है ऑन दिस टूर्नामेंट एज वेल, नहीं? कॉन्फेडरेशन कप के अंदर बहुत सारी छोटी टीम्स में इन्वॉल्व होती थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, वही हर 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 कॉन्टिनेंट का चैंपियन, यहाँ का खाली चैंपियन अपना होता था, हाँ। खाली साउथ तो आई अमेरिका और थिंक इसके यूरोप है ना। अंदर they just cut it decided to cut it short and make it one big match, like वन बिग मैच यार। removing that big tournament hustle, वो सारे टूर्नामेंट की to fly all those teams in, हम्म। हर कॉन्टिनेंट के चैंपियन को लेकर आना, they just decided to cut it short. तो या आई maybe थिंक they प्लेयर्स के continued लिए, future. हाँ इट मे बी, आई मुझे वही लगता है ना। आई थिंक इट्स मोर अबाउट वो प्री प्लानिंग हुई होगी ना उस समय, बेसिकली प्लानिंग वाज इन द टाइम जब कोविड वाज स्टिल अराउंड, राइट? तो By इट the वाज way, काइंड ऑफ। I think people might not remember, but इसके अंदर डिएगो मैराडोना का पास अवे होना also played a very big part in या। Finalissima being given such a push. क्योंकि him being a legend in Italy and for Argentina, and those two teams winning it, like at the very same time, this gave it a push. Diego Maradona का passing away gave this competition a push. राइट, राइट, एकदम एकदम। मतलब अगेन यार, यार रेस्ट इन पीस यार डिएगो मैराडोना, लाइक अगेन यार वन ऑफ दोज। आप बोल सकते हो, मतलब इन अ स्ट्रेंज वे आप बोलोगे कोपा अमेरिका भी मोटिवेशन लेवल थोड़ा अलग था, यू नो, फॉर द अर्जेंटीनियन टीम, वो क्लियरली दिख रहा था। और दैट इज समथिंग दैट ऑलवेज विल मोटिवेट एवरी अर्जेंटीनियन। मतलब आई थिंक डिएगो मैराडोना ने भी जीता है ये वाला टूर्नामेंट, सो अगेन इट इज इम्पोर्टेंट हम्म। फॉर देम। लेकिन मतलब अर्जेंटीना ही तो डिफेंडिंग चैंपियन है इस कंपटीशन की। राइट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। और यार मेसी मेसी की बात कर लेते थोड़ा, लाइक अगेन मतलब मेसी की बात नहीं करे हो ही नहीं सकता, बिकॉज कहाँ अभी 39 ट्रॉफीज है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम्म। डैनियल इज 43। तो क्या हम्म। लगता है, मतलब अज्यूमिंग कि अर्जेंटीना जीत जाए, मतलब मैं तो न्यूट्रल यहाँ पर सच में बोलता हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स यार बात तो आप कौन चाहते हो जीते? मैं लेकिन चाहता हूँ यार, मतलब आई थिंक मेसी डिजर्व्स इट, सिंपली पुट। नथिंग अगेंस्ट इटली, लेकिन आई थिंक मेसी डिजर्व करता है यार। मतलब अगेन वो डिबेट होनी नहीं चाहिए। आई थिंक ही इज इजीली वन ऑफ द गोट्स, टॉप 5 गोट्स ऑफ ऑल टाइम, इजीली। नॉट टॉप 3 भी बोलूंगा। तो अगर वो, मतलब आई नो नथिंग अगेंस्ट डानी एल्वेज, बट आई थिंक इफ ही गेट्स दिस, एंड लेट्स से बेस्ट केस सिनेरियो इफ ही गेट्स वर्ल्ड कप, कैन यू सी ओ माय मेसी काइंड गॉड, ऑफ एक्सटेंडिंग फर्दर? ओ बहुत माय बेस्ट केस गॉड सिनेरियो भाई, हो गया। मेसी गेटिंग वर्ल्ड कप, nobody gives nobody gives a damn whether he crosses Dani Alves or not. गुड The पॉइंट day यार। Messi gets a World Cup, we are going mad. I am I'm probably going buzz cut. I'm gonna go buzz cut. यार मुक्तेश ना, जब भी मैं और मुक्तेश साथ में होता है कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होता है मुक्तेश के साथ, और देखते हैं, मतलब दिस टाइम लेट्स लेट्स डू इट कोई यार। दिक्कत नहीं है, चलो कोई मजा दिक्कत नहीं है। आएगा। Messi, if Messi wins the World Cup, I'm going buzz cut. चलो चलो, नाइस नाइस। और भाई यार करीबन 125 लोग जुड़ गए यार, होपफुली सब लोग लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे। वी हैव 2 चैनल, जस्ट सो यू नो, और वी जनरली डू Hey, लॉट ऑफ कंटेंट। yeah. अभी तो यार थैंक्स टू मुक्तेश एंड एवरीवन हियर। लेकिन आई थिंक पहली बार आ रहे हैं ना मुक्तेश, आफ्टर चैनल इज बैक। हाँ, लेकिन यार डेफिनेटली हाँ, यार मैं पहली थैंक्स। बार आ लेकिन रहा हूँ। बाई चांस, मैं तो वापस बोलता हूँ, बाई चांस आपने मार्कोनी को भी नहीं किया है, कभी कभार बहुत बार होता है, यू वॉच इट एंड यू फॉरगेट टू सब्सक्राइब, तो यार प्लीज कर दीजिए, लिंक ऑल आर टैग बिलो, राइट? हेलो थैंक टू यू सो राजेश मच। इज वेल। लेकिन अगेन कंटिन्यूइंग अबाउट द टैक्टिक्स यहाँ पर थोड़ा सा, तो Mancini, like he's dealing with a lot of injuries. I think Virati injured hai, like we said. Berardi is out. Pinamonti is out. Immobile is out. Chiesa obviously long term injury है. तो मतलब he's gone on record saying that maybe he will reward जो यूरो विनर खेलता है, राइट? तो यूरो विनर जो भी टीम में थे ज्यादातर he'll try and reward them, और maybe future में he'll start playing the youngsters. But is there not an argument, Muktesh, that you should actually start playing your youngsters right now because it hasn't worked for Italy in the last few months? But it worked during the Euros. हाँ, of It didn't course, work after that. It didn't work right. after that. I think going into big competitions, जब मेरे हिसाब से पता है क्या है, कि जब आप एक ऐसी टीम जो सब जीत चुके हैं, तो
फॉर ये एग्जांपल ये देख। स्क्वाड ले लो। अरे नाइस, अरे नाइस देखो, देखो। नाइस। हाँ, हाँ। फॉर एग्जांपल आप ये स्क्वाड ले लो, ठीक है, ये सबको जीत चुके हैं, दिस इज द टीम हम्म, ऑफ विनर्स। व्हेन यू पुट देम आउट अगेंस्ट अ स्मॉल टीम, they usually play with their heads down सच में, हाँ in यार। terms of कि उनका obvious सी बात है, they have achieved it, they have achieved a lot, they have won a lot. I think यहाँ पर होता है जब छोटी टीमें कई बारी अपसेट करती हैं इन टीम्स को, क्योंकि ये हम्म, प्लेयर्स को लगता है कि वी आर bigger than this match, which is very obvious for big teams entering into small matches. I think वो मैचेस होते हैं जिनके अंदर आपको अपने यंगस्टर्स खिलाने चाहिए, फेयर एनफ। क्योंकि तब तब जाके होता है कि यू नो यू दे पुट इन द वर्क, दे पुट इन द एफर्ट, दे पुट इन देयर बेस्ट परफॉर्मेंस, कि मे बी अब हम बिग टूर्नामेंट में जाएंगे तो हम वहाँ पर भी खेलेंगे। हम्म, बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर लाइक यूरो के अंदर ये टीम अच्छा परफॉर्म करी क्योंकि इट वाज अ बिग टूर्नामेंट, दीज प्लेस फेल्ट ठीक है भाई हमारी नीड है। यूरोस अब वर्ल्ड कप क्वालिफाइज की बात करो, आप नॉकआउट क्वालिफाइज की बात करो सबकी, आई विल डोनेट 1 लाख रुपीज टू द नीडी वंस। अरे नाइस नाइस साउथ, ब्रिलियंट मैन। आई एम द नीडी वन। नहीं बट नो जोक्स अपार्ट भाई, बिल्कुल इफ मेसी विंस इट लेट्स डू इट, यस। तो इसलिए आई थिंक कि दे काइंड ऑफ हैव एक्चुअली सफर्ड हम्म, कुछ पास्ट टाइम के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। यार अगेन मतलब टॉकिंग अबाउट द लाइनअप भी मतलब क्लियरली मतलब मैं खाली ये नहीं बोल रहा हूँ यार प्ले यंगस्टर, मेरा ये है कि यार रास्पोदिदी और कमासा का ब्रिलियंट काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन रहा है ससुओलो के लिए, तो दैट इज आई थिंक मेरे लिए ऑन है। बेलोटी क्या क्या ही तो कर दिया मतलब रियली ही हैज बीन मिसिंग, इमोबिली इज नॉट अवेलेबल, तो दैट्स व्हाई मैंने तो ये डाला है कि ये होने वाला है। और अगेन लोग बोले स्पिनोज़ोला विल ऑब्वियसली बी एट लेफ्ट बैक, यार मतलब इफ यू केयरफुली सॉ रोमा सीजन, स्पिनोज़ोला हैज एक्चुअली बीन मिसिंग अंटिल द लास्ट कपल ऑफ वीक्स, बट मतलब ही इज नॉट बट बीन द फर्स्ट इंसीनियर चॉइस। बट इंसीनियर खेलेगा, इंसीनियर तो खेलेगा। इंसिनिया खेलेगा क्या लगता है? हाँ आई थिंक इंसीनियर को खेलेगी, दे आर नॉट गोइंग हम्म, टू। हाँ ही वाज देयर लास्ट टीम में तो वो था, तो इंसिनिया probably may play and Raspaji might come on. Uh, Muktesh, do you think that Italy will have some mental thing coming into this match because they've not qualified for World Cup? मतलब एक कर दो और दिखा देते टाइप ऑफ थिंग। हाँ बट एट द सेम टाइम बस मतलब मैंने अपने प्रीव्यू में यही बोला था कि दिस इज देयर लास्ट, उनके टीम में बहुत सारे प्लेयर्स के लिए लास्ट होप ऑफ अ वेरी गुड गुड बाय, कि ऑनरेबल गुड बाय, ट्रॉफी जीत के जाने का मौका। तो ये तो है, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी बिग फैक्टर फॉर देम इन दिस मैच, क्योंकि आफ्टर दिस आई डोंट सी इटली कमिंग इन टू हाईलाइट फॉर नेक्स्ट 2-3 years. They won't get a big chance. This is their only chance of highlight before the World Cup and after that as well. तो राइट, इसलिए राइट। आई थिंक काइंड ऑफ उनके ऊपर वो जो फोर्स तो रहेगा, वो ड्राइविंग फोर्स तो है उनके पास इस मैच के अंदर, ये बात तो है। बिल्कुल, बिल्कुल। और आई थिंक अर्जेंटीना की बात कर ले तो दे विल प्रोबब्ली मैच अप विद इटली। अर्जेंटीना इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो भी 4-3-3 खिला रहे फ्रॉम मेनी मंथ्स, तो आई डोंट थिंक ज्यादा हम्म, एक्सपीरियंस अर्जेंटीना तो यार मतलब वो 31 रन अनबीटन रन है, दे डोंट नीड टू हाँ चेंज ना सिंपली पुट। हाँ हाँ तो हाँ। आई थिंक वो दिखाई देते हैं एनीवन पीपल काइंड ऑफ कमेंटिंग, लेट्स सी मतलब टैक्टिकली बात कर ले तो थोड़ा सा, तो यहाँ पर वही है डी मारिया प्लेइंग इन दैट लेफ्ट साइड, मतलब इन अ स्ट्रेंज वे फॉर अर्जेंटीना इट हैज सूटेड, क्योंकि वो ही आप देखो तो कोपा अमेरिका में ही काइंड ऑफ गॉट टू द एंड ऑफ द बॉल रोड्रिगो डी पॉल का, तो आई थिंक इट नहीं वर्क्स बट वेल। आई थिंक विल सी मेसी प्लेइंग इन अ नंबर 10 रोल, नंबर 10 रोल। जहाँ पे Lautaro Martinez somewhat drift into that left half space, और डी मारिया हैंडल्स दैट राइट हाफ स्पेस, ऐसा हो राइट, जाता है, एंड मेसी कम सेंट्रली। आई थिंक ये सब कुछ होगा तो। मतलब मेसी विल बी द फोकल पॉइंट नहीं, वो तो पता ही यार, ही काइंड ऑफ बी मोर सेंट्रल और उसके थ्रू जाएगा। लेकिन आई थिंक एक न्यूज जो आ रहा है, काफी लोग चैट में बोले, अगेन बिग अप यार सब लोग चैट में भाई यार, मैं देख रहा हूँ कितना करीबन 160 लोग जुड़ गए, 160 लोग अरे जुड़ गए, नाइस। लेकिन कम ऑन लाइक वी आर जस्ट नियर 100 लाइक्स, लेट्स गेट इट अप यार, लेट्स डबल द नंबर ऑफ लाइक्स और डू सब्सक्राइब भूलना मत। लेकिन अकुनिया इज इंजर्ड, so हम्म, Tagliafico can be the weak link.
आई डोंट सी Tagliafico being the weak link, क्योंकि उसकी इफ एट ऑल। आई थिंक क्योंकि ना अर्जेंटीना के लिए परफॉर्मेंस समवॉट चेंज हो जाती है, क्योंकि ये लोगों का ऑफ द बॉल वर्क रेट, ऑफ द बॉल जो फिजिकलिटी है, दैट मेक्स अर्जेंटीना अर्जेंटीना। हम्म। तो आई सी Lo Celso being at the one of his best फॉर्म्स पे चल रहा है अपने करियर के। Lo Celso, रोड्रिगो दे पॉल अर्जेंटाइन जर्सी के अंदर अलग अलग लेवल पे रहता है, इवन रोड्रिगेज। तो ये सारे आई थिंक आई डोंट 4-4-2 होगा। हाँ मतलब फोर फोर नहीं इन नहीं नहीं ऑन द पिच सी एट टाइम्स। ऑन द भाई ऑन द पिच तो मेसी ऑलवेज ड्रिफ्ट्स इनसाइड फॉर द नंबर 10 राइट। ऑलवेज अर्जेंटीना में, एंड दे हैव गॉट 3 players up ahead always. So what are you going to call it? You're going to go 4-2-3-1 इट्स sort of हो जाता बेसिकली है। एक काइंड फोर टू ऑफ। थ्री वन सॉर्ट ऑफ हो जाता है। हाँ 4-2-3-1 हाँ, होता है एग्जैक्टली, टू बी ऑनेस्ट। हाँ। एक 4-2-3-1 हो जाता है, जहाँ पे मेसी इज इन, वो जो तीन के बीच वाला इज मेसी, ये इज गॉट हम्म, दी मारिया टू हिज राइट, एक कोई एक प्लेयर जो कि स्विच होता रहता है टू हिज लेफ्ट, देन गॉट लाउतारो मार्टिनेज अप अहेड। तो ऐसे रहता है। देन वो जो लो सेल्सो यूजुअली डज दैट लेफ्ट हैंड साइड वाला वर्क, हम्म। एंड रोड्रिगेज एंड दे पॉल कैन हैंडल थिंग्स फ्रॉम बिहाइंड। तो ये रहता है वैसे उनका यूजुअली। बिल्कुल बिल्कुल यार, एक बंदे का लेकिन आई थिंक अर्जेंटीना का मतलब इन स्ट्रेंज में मैं बोलूंगा जो डीएम थे ना, डीएम काफी मतलब यस्टरर्स में प्रॉपर डीएम उनको मिला ही नहीं था जो रिलायबल था। मास्करानो अगेन ही यूज्ड टू काइंड ऑफ प्ले, मतलब ही यूज्ड टू स्विच बिटवीन सेंटर हाफ एंड डिफेंसिव मिडफील्ड। लेकिन व्हाट अबाउट गिरो रोड्रिगेज, रोड्रिगेज जो किया है आई थिंक बेटिस के लिए ही इज रियली काइंड ऑफ लिव्ड अप। तो आप बोल सकते हो यार दे हैव फाइनली फाउंड दैट प्रॉपर डीएम जो कैन स्टार्ट ऑल योर गेम्स इन द वर्ल्ड कप। हाँ हाँ बिल्कुल भाई, मेरे को तो गिद्दे रोड्रिगेज की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया लगती है इन अर्जेंटीना, क्योंकि बिकॉज ऑफ हिम रोड्रिगो दे पॉल गेट्स दैट फ्री रोल मिडफील्ड के अंदर। डीएम्स यूजुअली अपने साथ वाले, अगर वो डबल पिवट के अंदर आ जाए तो साथ वाले एक एक अगर कोई प्रॉपर डीएमओ के खेलता है तो दूसरा वाला बंदा एंजॉयज दैट फ्री रोल। तो जब तुम डेपॉल को वो फ्री रोल दे देते हो ना, तो वो अप अहेड आगे जाए, क्योंकि रोड्रिगो, क्योंकि डेपॉल लाइक्स टू गो अप अहेड, अटैक में जाके लॉन्ग शॉट्स लेना, मिड में आके बॉल कलेक्ट करके थ्रू बॉल्स निकालना, जैसे डी मारिया को निकाली थी फाइनल के अंदर। तो आई थिंक उसका डेपॉल को बहुत फायदा होता है, इसलिए काइंड ऑफ वी रियली एंजॉय द पार्टनरशिप बिटवीन रोड्रिगेज एंड डेपॉल। और डेपॉल एक्चुअली ज्यादा कर सकता है, मतलब टू बी ऑनेस्ट एथलेटिको मैड्रिड ने उसको इतना फ्रीडम दिया नहीं गया है। आई रियली फील दैट वो ज्यादा कर सकता है जो अर्जेंटीना में देखने को मिलता है, जो कोपा अमेरिका में देखे थे। लाइक मुकेश सेड बाय द वे, अमर मैंने आपका देखा था कमेंट में, जानबूझ के हाईलाइट किया और मुकेश भी लाइक ये कमेंट क्यों हाईलाइट किया है भाई, मतलब आप थोड़ा सा चेक कर लीजिए, मतलब आप थंबनेल में 50 चीज नहीं डाल सकते ना, एक ही इंपॉर्टेंट चीज डालोगे। तो बेसिकली वो डाला है, हम बात करेंगे भाई। वी नो दैट ऑफ कोर्स एज अ वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन, आप देखो आई मेंशन दैट क्लियरली इन द टाइटल एंड एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में, तो हम करेंगे। तो प्लीज वेट। और अमर बिग अप यार, आप तो आप हमेशा आते हो, आप जानते हो वी काइंड ऑफ कवर कवर एज मच एज पॉसिबल। लेकिन अगेन मतलब क्या व्हाट इज द मेन काइंड ऑफ ओपनिंग जो होगा, मतलब ऑब्वियसली आई एम अस्यूमिंग यार मुक्तेश इज गोइंग फॉर अर्जेंटीना विन, तो प्रेडिक्शन लेने का फायदा है नहीं ज्यादा। लेकिन वो किस किस साइड से ओपन होगा, मतलब इटली का जो स्क्वाड है, लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक दे हैव बैकअप्स भी अच्छे हैं इटली के, टू बी ऑनेस्ट। मतलब आई नो इंजरीज है, बट दे कैन गेट पीपल ऑन इफ दे वांट, राइट? I think they're going to lose the ball a lot in midfield. That is where the game is going to be won for Argentina. क्योंकि अर्जेंटीना की मिडफील्ड में बहुत बहुत फिजिकलिटी, अर्जेंटीना की मिडफील्ड इज प्रोबेबली द मोस्ट फिजिकल ऑफ ऑल नेशनल टीम्स, उरुग्वे के बाद अगर मैं बोलूँ, उरुग्वे के अलॉन्ग साइड। तो आई हाँ सी मतलब देम, तो आई थिंक क्योंकि टेक्निकलिटी वैरायटी नहीं होगा, है ना, वेराटी इज अ ह्यूज मिस मेरे ख्याल से, वही पेसीना है ना। मतलब ही इज बीन ऑन एंड ऑफ ना बहुत। तो वैरायटी का एब्सेंस। देन मेरे को कोई बताता वो कौन सा प्लेयर है यार, अरे यार एक और जनियोलो मिडफील्डर इनका। मैं ही इज अ कॉल, बहुत लोगों ने जनियोलो स्टार्ट करेगा रोमा के लिए जो दिखाया जनियोलो, लेकिन यार अगेन वही है, लाइक मुक्तेश है ना, मैं बोलूंगा टैक्टिकली वो थोड़ा सा आई थिंक वीकनेस हो जाएगा, बिकॉज डिफेंसिवली आई एम नॉट श्योर जनियोलो ब्रिंग्स अ लॉट, और दे नीड एटलीस्ट टू पीपल जो डिफेंड कर सके इन मिडफील्ड। आई 100% अग्री देयर, क्योंकि यार अगेन आप खेल सकते हो इवन एट मे बी सेंटर हाफ में, मैं बोलूंगा आई नो किएली नहीं बोलना नहीं चाहिए लास्ट गेम है, लेकिन द फैक्ट इज लाइक
वो खेलेगा, पता ही है, क्योंकि यार इट्स हिज लास्ट गेम, तो ही विल स्टार्ट, मे बी वो सब करा जाए, मे बी अगर इटली जीत रहे एट दैट पॉइंट, और बास्तोनी माइट कम ऑन लेटर ऑन, लेकिन आई थिंक क्लियरली वो ये इटली हैव दो, और लोकेटेली आई थिंक जो आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लोकेटेली इज मिसिंग People, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। varieties in the squad. They're saying varieties in the squad. हाँ, लेकिन इंजर्ड स्टेटमेंट But आया मानचिनी का, hmm, मैं तो भी मैं भी नॉट सोच मैं मैंने पढ़ा तो था कि इंजर्ड है वो, बट क्योंकि देखते हैं मतलब। when you've got a technical play, जब तुम्हारे पास एक फिजिकलिटी, ओपोनेंट के पास एक फिजिकली डोमिनेंट मिडफील्ड होती है, यू हम्म यू वांट कोई टेक्निकल प्लेयर मिडफील्ड में हो जो मिडफील्ड में बॉल होल्ड ना करे, हु इज एबल टू यू नो एक दो प्लेयर्स जल्दी से कट ऑफ करके सीधा मेक क्विक क्विक पासेस, क्विक हम्म। स्विचेस, ये सब कुछ। तो वेराइटी ब्रिंग्स दैट टू द टेबल। आई थिंक अरे थग इटली, स्पोर्ट्स इन द हाउस, अरे नाइस थक नाइस। स्पोर्ट्स, नाइस नाइस ब्रदर, ऑल eyes on Messi tonight, yeah, can't deny that. So I think that is where for me Argentina is going to win this game, hopefully. ओके ओके, My prediction is going इंटरेस्टिंग। to be 3-1 to Argentina. 3-1 टू अर्जेंटीना, चलो। मैं भी यार मतलब अगेन मैंने तो बोला मेसी डिजर्व्स टू विन दिस एज मच एज इटली, आल्सो काइंड ऑफ शुड गेट अ कंसोलेशन प्राइज, लेकिन क्लियरली मुझे लग रहा है अर्जेंटीना को 31 गेम, मतलब आप लक नहीं बोल सकते हो, देयर इज स्कलोनी ने किया है भाई, स्कलोनी ने, और मैं वही बता रहा था मुकेश बिफोर यू जॉइन, कि स्कलोनी ने एक, आप बोल सकते हो टैक्टिकली ही इज नॉट देयर कंपेयर टू रॉबर्टो मैंचिनी, लेकिन द फैक्ट दैट स्कलोनी ब्रिंग्स दैट टीम टुगेदर और एक स्ट्रक्चर रखा है ना, वो एक चीज मिसिंग थी, वो ये बात कर लो डीएम्स की, बात कर लो कुछ भी, ही हैज गॉट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर और एक फिलॉसफी लाया, जहां पर मेसी इज योर फ्री मैन, ही कैन बी योर फ्री मैन, जो पीएसजी नहीं कर पा रही है, तो इन स्ट्रेंज वे इसलिए मेरे ख्याल से चल रहा है, तो मैं बोलूंगा मेसी मारेगा आज गोल, हैट्रिक तो नहीं मारेगा इतना मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मारेगा, और 2-1 होगा, तो 2-1 टू अर्जेंटीना, इट विल बी अ क्लोज गेम, और अच्छा गेम मिल जाएगा बस मिलने को, देखने को। आई वुड से Yeah. अर्जेंटीना द बेस्ट मिडफील्डर, प्लेमेकर मेसी है, प्लेमेकर की तो बात ही नहीं करें ऑब्वियसली, लेकिन किएजा इंजरी विल इट अफेक्ट? Oh, the biggest miss for Italy. But he was the biggest miss for Juventus. He was a big miss for Juventus. He's going to be a big miss for Italy. Huge miss. He brings a बिल्कुल lot to the table. He brings a lot. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, लेकिन हाँ मतलब अगेन फॉर पीपल सेइंग दैट वी हैव मोर देन दिस, आई एम इंटरेस्टेड, मैं बोलूं क्या, बहुत लोग स्पेशली मैन सिटी फैंस बोल रहे हैं हुलियन अल्वारेज को देखने को मिलेगा, लाइक देखने का मौका मिल जाए। बहुत बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो दैट इज समथिंग मैं आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, वो आएगा कुछ, ही विल एटलीस्ट प्ले हाफ एन आवर, लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि वी गेट टू वॉच हिम प्ले, एंड आई थिंक दिबाला in a strange way, can you, आप बोलोगे Dybala it's too early to say, लेकिन maybe Julian Alvarez, if he kind of does better than Dybala maybe in Argentine squad, he'll probably overtake Dybala, is it too For early World to Cup? say? हाँ, Too early to say. टू अर्ली एग्जैक्टली, लेकिन वही है, मैन सिटी फैंस इतना मतलब गुन गा रहे थे, कुछ तो होगा आई एम गेसिंग मैं इतना ज्यादा देखा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई नहीं, जस्ट वॉच I क्लिप्स। यार देखो, मेरे को क्योंकि मैंने जूलियन वायरस की काफ़ी क्लिप्स देखी है, मैंने उसके काफ़ी वीडियोस देखे हैं। आई लाइक हिम अ लॉट। काफ़ी ओके, मतलब हिज टाइमिंग ऑफ शूटिंग इज़ एक्सेप्शनल। बहुत पसंद है मुझे उसकी टाइमिंग ऑफ शूटिंग। तो मुझे वो प्लेयर तो काफ़ी पसंद है, बट देन इट कम्स टू कि डिबाला प्रोवाइडिंग दैट बैकअप टू नॉट जस्ट मेसी बट एट द वेरी सेम टाइम टू डी मारिया, ये सब बातें रहती हैं। एग्जैक्टली, बट एट द सेम टाइम देन डिबाला इज काइंड ऑफ वन डायमेंशनल इन कंपैरिजन टू जूलियन अल्वारेस, क्योंकि जूलियन अल्वारेस बहुत बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल प्लेयर है। ही कैन यू कैन पुट हिम ऑन दैट लेफ्ट विंग, यू कैन पुट हिम ऑन द राइट विंग, यू कैन प्ले हिम सेंट्रली। So he brings that something in addition to the table. But then again, बिल्कुल। he hasn't played on that big level. तो वर्ल्ड कप के अंदर सब कुछ ये करना, बड़े कंपटीशन में फ्यूचर के अंदर टू सी हिम, आई डोंट नो। नहीं नहीं, ग्रेट पॉइंट अबाउट एडेप्टेबिलिटी भी होती है ना, और इतना यंग होने से यू आर मोर, आप मोल्ड कर सकते हो उस प्लेयर को कंपेयर टू मे बी दिबाला, जो आगे मतलब नथिंग अगेंस्ट दिबाला, कम ऑन, लाइक यार चेल्सी के साथ लिंक हो तो मैं तो बोला था भाई, मतलब अपग्रेड है नो मैटर व्हाट तो लाना तो बनता है, लेकिन फिट नहीं होता, ऐसे बोला था मैं, लेकिन हाँ मतलब डी मारिया फॉर अर्जेंटीना आई वुड से यार ऑलमोस्ट इस साल के लिए तो इंडिस्पेंसेबल है,
he works really well for Argentina. तो that's इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक spot जो है maybe it might be Alvarez अगर वो ले लेता है opportunity. But again इटली के लिए भाई मतलब आई थिंक इंसिनिया की बात हो गई थी. बेलोटी इज समवन दैट नीड्स टू कम बैक. एक सीजन था यार इतना सॉर्ट आफ्टर स्ट्राइकर था, लेकिन अगेन ही इज गॉन डाउन हिल. तो मतलब इट बी इंटरेस्टिंग यार, काफी सारे सब्स भी है. और I, I, आई I, थिंक I agree with old school purists here. I agree with him. I think that could be a very big reason for Alvarez to be chosen. अरे ओल्ड स्कूल प्योरिस्ट मैंने अभी देखा, आपने अपना नाम चेंज कर दिया. राजेश आप ही हो ना? हाँ, ये old school whiskey था ना. It's an old एग्जैक्टली school whiskey. एग्जैक्टली, मतलब प्योरिस्ट कैसे हो गए सडन से? नाइस नाइस. एनीवे लेकिन आई थिंक I'll just take one more second, okay? Yeah, हाँ हाँ थोड़ा बिल्कुल important लीजिए. है ना आज. Yeah. कोई नहीं कोई नहीं. अरे तो पीपल, आई विल टेल यू वन थिंग, लाइक व्हाई इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट इज द फैक्ट दैट ड्रामा मिलने को बेसिकली चांस ज्यादा है. मैं बोलता हूँ क्यों. इफ इट स्टेज इक्वल इन 90 मिनट्स, वो डायरेक्टली पेनल्टीज पे जाएगा. देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम. तो क्वाइट पॉसिबल है. आई नो मतलब इफ यू आर अ सपोर्टर इटली के या अर्जेंटीना के, यू डोंट वांट पेनल्टीज, लेकिन एज अ न्यूट्रल तो यार ड्रामा तो हमेशा देखने को मिलता है. तो आई डोंट माइंड इट, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो हाँ, नॉट काइंड ऑफ प्रेडिक्टिंग, सिर्फ बोल रहा हूँ कि दैट इज द ऑप्शन. मुकेश, पेनल्टीज यार, व्हाट डू यू थिंक? पेनल्टीज अगर जाता है तो who's having better penalty takers? भाई जोर्जिनियो. मैं नहीं चाहता पेनल्टी जाए. मेरी है तबीयत खराब. मैं नहीं जा पाऊंगा. कुछ ज्यादा मेरे को लग रहा है मेरा माथा खराब हो जाएगा. तो तो मैं तो भाई I don't want this to go into penalties. या कोई नहीं. चलो यार, एनीवे इसकी तो बात हो गई. क्विकली वी विल टेक द प्रेडिक्शंस ऑफ द अदर इंपॉर्टेंट गेम्स है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट गेम है स्पेशली फॉर स्कॉटलैंड एंड यूक्रेन. यहाँ पर वी विल हैव टू गिव यार टू यूक्रेन, मतलब हैट्स ऑफ टू यूक्रेन. मतलब जो वो कंट्री झेला है इन द लास्ट फ्यू मंथ्स टू एक्चुअली एक्सेप्ट टू बी हैविंग प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन मैच. आई थिंक वो दिखाता है यूक्रेन एज अ कंट्री. मतलब दे हैव डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एलिमेंट. और बट अगेंस्ट स्कॉटलैंड, आई थिंक स्कॉटलैंड 1998 के बाद क्वालिफाई नहीं किया वर्ल्ड कप के लिए. यूक्रेन भी 2006 के बाद नहीं किया है. तो इट्स क्रूशियल सेमीज, और दे विल बी प्लेइंग वेल्स. वहां पर वेल्स का गैरेथ बेल आज अनाउंस कर दिया रियल मैड्रिड टाटा बाय बाय. हाँ. ठीक है, तो ही इज वेटिंग संडे को कि कौन आएगा. तो क्या लगता है यार, स्कॉटलैंड आई थिंक रिसेंट गेम्स में जैसे हमने इटली अर्जेंटीना की बात किया था, आई थिंक अर्जेंटीना का पलड़ा भारी है इन टर्म्स ऑफ हेड टू हेड. स्कॉटलैंड जनरली आई थिंक काफी बेटर किया. आई थिंक दोनों ही क्वालिफायर्स में शायद सेकंड आई थी अपने अपने ग्रुप्स में, स्कॉटलैंड और यूक्रेन. लेकिन अगेन पाते का जो है मैं तो बोलता हूँ भाई, मतलब क्लियरली स्कॉटलैंड इज अ बेटर टीम ऑन पेपर. मतलब इन टर्म्स ऑफ द पैशन स्टीव क्लार्क है, मे बी वो चेल्सी एलिमेंट थोड़ा सा बायस है मेरा. लेकिन अगेन आप लोग बोले कमेंट्स में व्हाट डू रॉबर्टसन यू भी तो थिंक? है. रॉबर्टसन रॉबर्टसन स्कॉटलैंड का है. खेलेगा क्या? लेकिन 90 मिनट्स यूसीएल के लिए लास्ट वीक नहीं खेला. खेलेगा प्रॉब्ली. तो बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, खेलना भाई चाहिए. वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन का है ना, गलत तो नहीं हो ना मैं. उनके पास शायद बैकअप्स भी अच्छे हैं लेफ्ट बैक पे, नॉट रॉबर्टसन लेवल, लेकिन आई थिंक रेंजर्स का जो है ना, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, बी से है, ही इज प्रीटी गुड. और अपना बेसिकली अच्छा नहीं, वो शायद स्कॉटिश नहीं हो, शायद क्रोएशियन है. टियरनी इज द गाय, टियरनी फॉर आर्सेनल, लेकिन वो भी इंजर्ड है. करेक्ट करेक्ट. तो रॉबर्टसन खेलेगा, रॉबर्टसन विल प्ले. लेकिन आई थिंक मैं तो यार आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी बिली गिलमोर. बिली गिलमोर का सीजन फॉरगेट होने वाला सीन हो रहा है थोड़ा. तो होपफुली वो वापस आ जाए. तो पता नहीं यार क्या लगता है, मतलब यूक्रेन के लिए आर्मलेंको है, जिंचेंको है. आज जिंचेंको के काफी स्टोरीज आ रहे थे कि यार ही माइट लीव मैन सिटी. बट यूक्रेन ज्यादा मोटिवेटेड. आई नो वर्ल्ड कप दोनों ही इट्स डू और डाई फॉर बोथ द टीम्स, लेकिन यूक्रेन जो हुआ है ना उनके साथ रिसेंटली, वुड यू से दैट यूरोज में अच्छा की थी, देन अभी यहाँ है तो they will have to have that extra bit compared to Scotland कि यार स्कॉटलैंड मैगिन है, मैगिन एस्टन विला का काफी अच्छा प्लेयर है. क्या लगता है जी किसका पलड़ा भारी है? स्कॉटलैंड का पकड़ा मेरे को देखो पर्सनली भारी लगता है. उनकी फॉर्म, उनकी एंट्री इनटू दिस मैच, उनकी फॉर्म भी काफी बेटर है. आई थिंक दे हैव बीन ऑन अनबीटन रन फॉर कुछ गेम्स. आई एम नॉट श्योर. चैट यहाँ पे बता पाएगी हमें. हाँ, स्कॉटलैंड है, मतलब अगेन मतलब इन टर्म्स ऑफ छोटा सा कुछ छोटा रन है, ड्रॉज है बहुत सारे, बट दे हैव गॉट अ प्रीटी डिसेंट रन ऑफ फॉर्म.
राइट, मेरे को राइट। यहाँ पे चैट चैट कैन लेट अस नो हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्ट फ्रॉम स्टार्ट तो मुझे भी याद नहीं है, एट द बैक ऑफ माई हाँ माइंड, लेट मी जस्ट क्विकली चेक। लेकिन मतलब हाँ, दे हैव रिकॉर्डेड 7 विन्स फ्रॉम द लास्ट 10 मैचेस। भाई साहब, यू तो नेक्स्ट लेवल अच्छा परफॉर्मेंस हाँ है यार, मतलब दैट्स हाँ रियली गुड, एब्सोल्युटली, आई एग्री 100%। लेकिन आई थिंक वही है, मतलब चलो देखते हैं, अगर स्कॉटलैंड जीतती है, दे विल मैकटोनी में फेस भी वेल्स। खेलेगा ही स्कॉटलैंड के लिए। मैकटोमिने, हम्म आई थिंक वो मस्ट मस्ट नहीं है, क्योंकि यार ही समझ जो सेंटर हाफ में भी खेला है स्कॉटलैंड के लिए काफी, मतलब हाँ ही तो कवर्स टू मैकटोनी में भी पोजीशंस। है, रॉबर्टसन भी है, देन they have got pretty solid हाँ, squad in ये comparison to माइकल UK. यार, whenever I need data ना, I just go to Michael, he's the encyclopedia for me. By the way, Oh, people shout out यार, Michael Talks Football को, काफी अच्छा चैनल अरे है। Yes, नाइस Scotland नाइस last lost in माइकल, September. Great start that, and Tierney थैंक यू is a माइकल। fantastic player. और यहाँ पर लाइट आ गई वापस आ एक गया सेकंड के लिए गई थी। इट्स बैक। Tierney is a fantastic player, but is always injury prone. Yes, Robertson is extremely dangerous. यहाँ पर quickly go be the next Aguero for City. भाई टू बिग भाई, आई थिंक यू शुड। अब हम लोगों को ना आफ्टर व्हाट हैपेंड टू हैजार्ड, आफ्टर व्हाट हैपेंड टू कुतिन्यो, डेम्बेले, आई थिंक वी शुड स्टॉप आस्किंग सच क्वेश्चंस गाइस कि ये इसको रिप्लेस कर पाएगा नहीं कर पाएगा। हैजार्ड 100%. couldn't fill in the shoes for Ronaldo. Coutinho, Dembele couldn't fit in the shoes for Neymar. I think this just puts a lot of pressure and hopes को ज़्यादा ही बढ़ा देता है। I don't think there is going to be another Aguero for Man City ever. Aguero's बिल्कुल, Aguero moment is like one of the greatest peak moments in EPL history. ऐसा है वो। तो भाई ऐसे करके तुम किसी को अगर ऐसे जज कर रहे होगे ना, आई थिंक एक्सपेक्टेशन रखना वुड बी अ बिट टू मच इन माय ओपिनियन। ट्रू ट्रू 100% अग्री देयर, मतलब आप कंपेयर बहुत इजीली कर लेते हो। मैं तो बोलता हूँ कोई भी स्पोर्ट में भाई आप कंपेयर मत करिए, और आप बेसिकली एवरी प्लेयर हैज देयर ओन आइडेंटिटी। लेकिन रोमन 69 का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कौन आप चाहते हो, मतलब मैं बोलूं मैं वेल्स क्विकली। चाहता हूँ, मैं वेल्स चाहता हूँ क्योंकि वेल्स, मैं गैरेथ बेल का बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके, फेयर इनफ, फेयर इनफ यार। मैं एक प्लेयर है यूक्रेन में, मुझे सच में बहुत अच्छा लगा इस सीरीज में, पूरे सीरीज में, दैट इज मालिनोव्स्की। मालिनोव्स्की का बहुत ही मतलब तगड़ा रहा है इन टर्म्स ऑफ यूरोपियन क्लब कॉम्पिटिशन, ही डन रियली वेल। तो मैं उसको चाहता हूँ, लाइक ही इज नॉट गॉट इतना क्रेडिट जो उसको मिलना चाहिए फ्रॉम मी, सो आई रियली लाइक वाचिंग हिम, मतलब जस्ट फॉर दैट मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो हाँ, मतलब वेल्स आप बोलोगे टेक्निकली भी, आई थिंक दे हैव अ लॉट मोर स्टार्स, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि यार वेल्स विल गेट मोर सपोर्ट कंपेयर टू द अदर टू टीम्स। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग रहेगा। Shea Adams has to be clinical like he usually is for Scotland. Zinchenko playing in the 10 role. हाँ, Zinchenko midfield खेलता है, मतलब that's a great point as well from हम्म Michael again. हम्म। तो मतलब do you say Zinchenko का जो हुआ है मैन सिटी के साथ in a strange way, मतलब you know it has been unfair on him because he's actually a midfielder जो who can play left back ना, he's not the other way around. तो But it doesn't matter when you're playing at Man City. हाँ Can you tell आप me, like, he can't be a better midfielder than Bernardo Silva, then Rodri, then Kevin De exactly, Bruyne? तो कहाँ खेलेगा? exactly. नहीं नहीं, what I'm saying is like maybe as a backup to Rodri next season, वो एक ऑप्शन है, सोच सकता है पेप गार्डियोला, बिकॉज वो he is a ball playing kind of a DM as well at times, तो he can do both the roles। तो वही है, he can be a starter at other clubs as a midfielder, not many clubs, लेकिन many clubs he can be ना, that's what I was trying to say। But anyway, most of the Ukraine players haven't played a competitive game since December। Yes, I think that's also important, right? मतलब realistically speaking, वो फॉर्म की बात हो जाती है थोड़ी, और obviously because of what was happening in their country, it was kind of expected as well। लेकिन हाँ, ये यार किसी ने बैन किया है क्या ये, अच्छा करने को बोल रहा है, क्या हुआ यार, ऐसा क्या हुआ? कोई नहीं, कोई नहीं यार। क्विक प्रेडिक्शन यार, जाने से पहले, कम ऑन लेट्स प्रेडिक्ट, क्या लगता है इस गेम में? Scotland for the win. स्कॉटलैंड फॉर द विन, तो मतलब लेकिन 2-1. स्कॉटलैंड के लो No, स्कोरिंग ही 2-0. रहते हैं ज्यादा, नहीं? 2-0. A 2-0 2-0, one. चलो, 2-0 गोल्स हो 1. जाए बस, देखने में अच्छा लगे दैट्स व्हाट आई वुड वांट। Exactly. Exactly. अदरवाइज गुड फन। यस, एंड बाय द वे यार, हम लोग नेशंस लीग की बात भी करने वाले हैं थोड़ी बहुत, सो बने रहना। बट आई नो मुक्तेश जाना है अभी, मेरे को आज लेकिन थोड़ा होप हाँ टू सी मतलब यू यार, मतलब yes. गेट वेल सून। एंड Thank you so मतलब much. अगेन यार थैंक्स, मैं तो फॉर्मली बोलना चाहता हूँ, बिकॉज मैं मुझे याद ही अरे नहीं है, फोन आफ्टर द चैनल इज बैक, फर्स्ट टाइम मुक्तेश इज बैक टू द चैनल, राइट? आप तो थैंक यू मत बोलो, आप बस वापस इनवाइट कर लेना ताकि आई कुड अरे बी अरे, हियर फॉर अ ऑलवेज यार, लॉन्गर आपका ही टाइम चैनल है, नेक्स्ट कम ऑन। टाइम। हाँ, आई अरे आई ट्राई बिल्कुल टू बिल्कुल। बी हियर फॉर द लॉन्गर टाइम नेक्स्ट टाइम। अरे या डेफिनेटली डेफिनेटली, टेक केयर यार, टेक केयर। चलो गाइस, थैंक यू इन सो मच केस नहीं गाइस, किया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू
Almighty Blues FC and Almighty Sports Plus. Thank you so much. थैंक यू चलो यार आपको भी Okay, so guys, as Muktesh is leaving us for now, लेकिन he'll be back soon. Could Wales make it to the World Cup ahead of Ukraine and Scotland? या मैं ले लेता हूँ नीतीश आपका क्वेश्चन. Wales should. Wales should. I think Michael made a great point comments में और Michael said that Ukraine players ने खेला नहीं है बहुत, तो that might be against them. और Scotland का I know Shea Adams है, there are a lot of players in Scotland जो impress किए, McGinn है. I cannot see them scoring ज़्यादा goals. So I think Wales have more goals in them. Not that Wales भी ज़्यादा goals करती है, लेकिन I think they have more options. It's just that the way they go, right? Please tell who will wear away jersey because both teams can't wear the traditional jerseys. अच्छा, तो from what I know, आदित्य यहाँ पर again मैंने चेक तो नहीं किया है, but I think if I'm not wrong, they would have already decided that. I think दोनों टीम्स ने बात कर लिया होगा. One team जैसे क्लब फुटबॉल में क्या होता है ना, lot of times जब both the teams kind of are playing in a neutral place और दोनों की jerseys kind of similar होती है ना, तो one club kind of says that okay, जैसे चेल्सी की बात कर लेता हूँ as an example, in basically the FA Cup final we I think played yellow, ठीक है, क्योंकि that is a lucky jersey compared to blue, तो वो एक होता है, तो I think it's down to them absolutely. ओ यस, पॉगबा छोड़ गया मैन यूनाइटेड. भाई हम ट्रांसफर्स की बात भी करेंगे एब्सोल्युटली, लेकिन चंदन थैंक यू ज्वाइन करने के लिए. आई होप यार सब लोग ने लाइक कर दिया. लेट मी क्विकली चेक कितने लाइक्स हुए. लेट्स रीच अ टारगेट पीपल. आप अपना टारगेट दिख रहा है. लेट्स रीच अ टारगेट बोथ इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस एंड लाइक्स. लेकिन भूलना मत, आज रात को वी आर लाइव ऑल्सो फॉर द वॉच अलोंग. यस, हम दोनों ही मैच साथ साथ में वॉच अलोंग करेंगे क्योंकि साथ में होने वाला है फिनालिसिमा ऑफ कोर्स, लेकिन यूक्रेन स्कॉटलैंड भी हम करने वाले हैं एब्सोल्युटली. तो आई एम सीइंग दैट कम ऑन यार, वी आर नॉट इवन 200 लाइक्स. लेट्स एक्चुअली गेट टू 300 लाइक्स. मैं बोल रहा हूँ बहुत डूएबल है. जस्ट द प्रेस ऑफ अ बटन. लेट्स लाइक द स्ट्रीम क्योंकि और लोग आएंगे. देन विल डिस्कस लिटिल बिट मोर ट्रांसफर्स और ऑफ कोर्स द नेशंस लीग, जो मैं प्रीटी श्योर हूँ बहुत लोगों को नेशंस लीग इतना क्लोजली फॉलो नहीं करते, तो इट माइट बी समथिंग न्यू. सो लेट्स एक्चुअली गो दैट बिकॉज ट्रस्ट मी, इस साल अगर आप इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं फॉलो कर रहे हो, यू आर मिसिंग आउट ऑन लॉट. क्योंकि यार इट इज द ईयर ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल. काफी सारा चीजें, इसलिए नेशंस लीग भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू विल गेट टू नो यार कैसा फॉर्म चल रहा है, कैसा टैक्टिक्स है फॉर एवरी इंटरनेशनल टीम. एब्सोल्युटली. Oh yes, get well soon, Markaroni, absolutely. अरे मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट यार, थैंक यू एब्सोल्युटली. और ऐसे ही यार सब लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए टू बोथ आवर चैनल्स. भाई बिग फैन हूँ ये मार्क. अरे यार ये मैं कमेंट देख रहा हूँ तब से, ठीक है. Great that you're a fan, लेकिन let's respect every opinion. I love his content, yeah. I love his content. So let's not do that. Ankit, if I'm not wrong, the champion of this qualification playoff will join England. Yes, absolutely. Thanks, yeah, Nitesh. मैं भूल गया था वो point. बहुत ही बढ़िया point. So it is possibly one of the groups of death. पता नहीं, मेरे लिए तो है. Iran, one of the Asian teams, of course. Iran with USA. North American team and North American में रहा हो, so kind of close. England, of course, with all the English players being there in the Premier League, most of them. So and then of course maybe Ukraine, Wales और Scotland join करेगी. So Nitesh, great point आपका. Thank you always यार. Just putting it across. नेशंस लीग के फॉर्मेट की एक बार बता दो. क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली कर देते हैं. चलो क्विकली. तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा, बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगा. तो नेशंस लीग क्या है, ठीक है. जैसे केविन डे ब्रुयने ने बोला, नेशंस लीग है एक टूर्नामेंट जो एक सेट ऑफ ग्लोरीफाइड फ्रेंडलीज है. आई 100% अग्री विद हिम, ठीक है. और ये कितने बार खेला गया? ये 2 बार खेला गया, ये तीसरी बार है. हर 2 साल में एक नेशंस लीग ट्रॉफी विनर होता है. ओके. पहला ट्रॉफी विनर वाज पोर्चुगल. पोर्चुगल बीट माय टीम, दैट इज नेदरलैंड्स, माय फेवरेट टीम इन यूरोप. द सेकंड वन रिसेंट हुआ था, काफी लोगों को याद भी होगा. बेंजिमा ने मारा था गोल, इफ आई रिमेंबर राइट. लुकाको ने भी मारा था उस गोल में बिकॉज फ्रांस बीट बेल्जियम. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है. तो ये हुआ है. और अभी थर्ड वाला क्या है, फॉर्मेट बता देते. 55 टीम्स है. You heard it right. There are 55 teams, and yes, people, I'll come to the chat. Hold on till मैं explain करने की कोशिश कर रहा हूँ simple words में. 55 teams too much है, लेकिन अपना concentration किया है, for people who follow high end European football. मैं बोलूँगा Nations League A is most important. A B C D E if I'm not wrong. तो 16, 16, 16, 16 और 7, ठीक है. 5 लीग्स होंगे, उसमें लीग ए इज द इंपॉर्टेंट वन. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो 16 टीम्स है ना, 16 टीम्स डिवाइड हो जाएंगे 4-4 टीम्स में, ठीक है. तो ऑलरेडी पॉट और ड्रॉ हो गया है.
तो 4-4 टीम्स में डिवाइड होंगे, मैं दिखाने वाला हूँ 1 मिनट में व्हाट इज द काइंड ऑफ ग्रुपिंग्स। तो 4-4-4-4 4 ग्रुप्स हैं इन लीग ए। तो उस लीग में जो भी हर ग्रुप जीतेगा ना, तो लीग ग्रुप ए, ग्रुप बी विनर, ग्रुप सी विनर और ग्रुप डी विनर, 4 विनर्स विल गो ऑन इनटू अ शॉर्ट टूर्नामेंट और नॉकआउट टूर्नामेंट जो हुआ था लाइक लास्ट ईयर एज वेल। तो दे विल आई थिंक compete बाय नेक्स्ट ईयर जून। तो 1 साल तक चलेगा इन बिटवीन, जब भी इंटरनेशनल ब्रेक होगा तो नेक्स्ट ईयर जून में होगा। ये चारों टीम खेलेगी नॉकआउट टूर्नामेंट और जो विनर होगा दैट बी द नेशंस लीग विनर। अच्छा, व्हाई इज नेशंस लीग इंपॉर्टेंट? इट्स नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मोमेंटम और वर्ल्ड कप ईयर है, आपके सिलेक्शंस टैक्टिक्स अब आप काइंड ऑफ फिक्स कर सकते हो। लेकिन आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आई एम श्योर सर्टेन कंटेंट क्रिएटर्स भी है चैट में, लेकिन अगर मुझे याद है करेक्टली तो नेशंस लीग में योर रैंकिंग विल काइंड ऑफ डायरेक्टली डिटरमाइन आपके यूरो 2024 के सीडिंग्स के लिए। ठीक है, तो यूरो 2024 होगा, उसमें सीडिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट हो, वहां पर आपको हो सकता है आपको इजियर ग्रुप मिले। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव एज वेल। तो अगेन वेरी सिंपल टर्म्स में मैंने समझाया, आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड व्हाट इट इज, राइट। यहाँ पर बिफोर शोइंग द ग्रुप्स मैं क्विकली ले लेता हूँ कुछ और कमेंट्स। ओके, विल हजार्ड कम चेल्सी अगेन? मेहदी हसन, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग ऑन, लेकिन मुझे नहीं लगता। आई थिंक वो क्लियरली बोला है, आई थिंक द सेलिब्रेशंस ऑफ रियल मैड्रिड दैट नहीं, नेक्स्ट ईयर मैं करके दिखाऊंगा, आई विल बी देयर ऑन द पिच एज वेल। तो आई थिंक वो मैड्रिड में ही रहेगा। और आई थिंक एंचेलोटी ने वापस से मेकअप कर दिया हजार्ड के साथ। इज मरीना गोइंग आउट? भाई ये बहुत लोग मुझे पूछ रहे, जहां तक मुझे पता है शी विल बी स्टेइंग हियर एटलीस्ट टिल दिस कैलेंडर ईयर एंड। मतलब अगर कुछ और है तो यार मुझे बताइए सोर्स, आई विल सर्टेनली ट्राई एंड हाईलाइट दैट। आई थिंक इंग्लिश फैंस विल सपोर्ट अर्जेंटीना टुनाइट। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। फ्रांस बीट स्पेन 2-1, इंटरेस्टिंग। अच्छा, मेरा फेवरेट नेशनल टीम ये है, आई नो यूजुअली ऑरेंज जर्सी होता है नेदरलैंड्स का, दैट्स अ नेदरलैंड्स ऑल्टरनेट जर्सी फ्रॉम 2010 वर्ल्ड कप, वाका वाका वाला, एब्सोल्युटली वही वाला वर्ल्ड कप है। रॉबिन का जर्सी, रॉबिन इज माय ऑल टाइम फेवरेट प्लेयर, जस्ट सेइंग अप देयर। लीग बाबा बाबा से बात करते हैं जल्दी। यहाँ पर और ले लेते हैं, विल एनी फाइनल बी प्लेड इन स्टाड द फ्रांस इन फ्यूचर? Very big question, very good question यार। can you blame Stade de France alone? I don't think so. मेरे ख्याल से यूएफा एज एन ऑर्गेनाइजेशन भी रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, नहीं? क्या नहीं लगता आपको? मे बी दोनों क्लब्स भी रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अपने फैंस के लिए। तो आई थिंक खाली ब्लेमिंग स्टाड द फ्रांस इज नॉट श्योर। हाँ, मे बी वो स्टाड द फ्रांस को थोड़ा ब्रेक देंगे फॉर व्हाट हैपेंड इन द फाइनल, डिले जो हुआ था, टीयर गैस एंड ऑल दैट। लेकिन आई थिंक पेरिस में तो खिला जाएगा, मे बी पार्क दे प्रिंसेस में खिला जाएगा, दैट्स व्हाट आई वुड से। At least for the time being. I want Ukraine to join them so that it becomes group of geopolitics instead of World Cup. And also imagine Russia was there in the playoffs. Russia to yaar, matlab again Nations League maybe I think a star mark है, so I don't think they'll be qualifying. Let's say they'll be playing. Depends on what the situation होगा next few months में. Manav, thank you join करने के लिए। Nations League not lived up to the expectations. 100% bro, 100%. मानव, लेकिन मैं यही बोल रहा हूँ, मैं क्यों अभी अनलाइक अर्लियर इन ईयर ऑल्सो मैंने कवर किया था नेशंस लीग थोड़ा कंटेंट, लेकिन अगेन खाली सेमीज और फाइनल्स का कवर किया था, ज्यादा कवर नहीं किया था। व्हाई? बिकॉज अर्लियर इट वाज ग्लोरिफाइड फ्रेंडलीज काइंड ऑफ टूर्नामेंट। लेकिन अभी डिफरेंस क्या है नेशंस लीग में, मैं बोलूं डिफरेंस है कि यार वर्ल्ड कप ईयर है, तो ये नेशंस लीग में आप बोल सकते हो यू विल एनीवे रोटेट, लेकिन अच्छा मौका है भाई टू सी व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर द डिफरेंट टीम्स, व्हाट आर द टैक्टिक्स। और आप देखोगे नेशंस लीग में देयर विल बी सर्टेन क्लोज गेम्स भी, तो देखने को भी बुरा नहीं लगेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। yes, it affects euro seedings, बहुत important point मानव भी repeat किए, absolutely मानव, thanks, but we still have increasing the fatigue in players, bad for the players definitely. Thoughts on 2010 Netherlands journey? They didn't play the best football but managed to almost win the cup. Also, I've heard people in Netherlands don't acknowledge the campaign much. I don't care about people in Netherlands. I am a Netherlands fan और मुझे पता है यार, from the time that Van Basten ended, from the time Ruud Van Nistelrooy was there, Roy Mackay of the kind, Snyder came before that, Seedorf, Robin of course, a lot of players है, some of the best that मुझे अच्छे लगते थे in Netherlands journey. लेकिन मैं बोलूंगा 2010 वर्ल्ड कप in a strange way you are not happy, so be it यार। I am, आप माना आप फॉलो करते हो, बहुत लोग फॉलो करते हो, I am not for one who wants only sexy football, मैं उसमें बिलीव नहीं करता। Yes, there is part of it. Didn't they play good football as well? In moments they did, of course. Yeah, Robin had a fantastic tournament. Snyder had a fantastic tournament.
Arguably Snyder was robbed of the Ballon d'Or. तो I would say it was unfair because जो फाइनल में हुआ था, I think it was नाइजल डियोंग जिसने कुंफू किक मारा था. Because of that, you just remember that the game against Mexico, you remember that. लेकिन for me there were moments, there were great moments as well. So I would say in my career watching as a Netherlands fan the last 20 plus years, मैं बोलूंगा easily my best tournament that मैंने देखा है. Actually नहीं, मैं बोलूंगा just the kind of football ना यूरोज में 2 years before they played even better football in terms of football. लेकिन हाँ, in terms of moment it is the best moment यार. It is highly competitive. निखिल बोल रहे हैं fair enough. अरे आप स्पैम मत करिए भाई, प्यार दीजिए लेकिन स्पैम मत करिए, और लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर नहीं किया है. सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऑलमाइटी ब्लूज एफसी एंड ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, बिकॉज यस यू विल गेट अ लॉट मोर कंटेंट. चेक इट आउट, बहुत सारा प्लेलिस्ट है हम लोग का. बट विल बी आल्सो लाइव टुनाइट फॉर द वॉच अराउंड ऑन ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस, so वो मत भूलना भाई. एब्सोल्युटली अपने डार्क सर्कल्स पे ध्यान दो, मेरे भी डार्क सर्कल्स है. अरे पता नहीं यार, मेरे ख्याल से लाइटिंग का प्रॉब्लम है थोड़ा. लेट्स प्ले थोड़ा सा, आई थिंक आई नीड टू अपग्रेड ऑन द लाइटिंग. तो हाँ, अगेन यार मैं बोलूंगा subtle way of saying it, लेकिन हाँ ज्यादा सुपर चैट्स आएंगे तो मे बी आई बी एबल टू इन्वेस्ट बैक इन द चैनल बेटर. Put it that way. Only if you can afford, ठीक है, and only if you think that I deserve it, only then, ठीक है. Looks like the Dea won't be selected in the World Cup. Enrique like good ball reception play from yes. There is a possibility. Especially it also depends on. I know मैं बोलने वाला हूँ, आप हंसोगे, लेकिन केपा कौन से क्लब में जाते? It depends. Kepa had lost his confidence. He did decently this well, or maybe he'll be better. Let's see. Whatever clubs he goes to, but let's see. Okay, have to respect players' mental health and fatigue. लेकिन नितेश, वही है, पैसों की बात आ जाती है. They want more glorification. I agree there. लेकिन are they telling all the teams to play their 11 for every competition? I don't think so. तो I think especially when it comes to Nations League A ना, Nations League A, उसमें the most of the countries जो है, अगेन मैं दिखाना भूल गया, मैं दिखाई देता हूँ. चलो, तो यहाँ पर मैं शेयर करने वाला हूँ स्क्रीन, और मैं दिखाने वाला हूँ क्या है नेशंस लीग ए. ठीक है, तो आज रात को आई थिंक पोलैंड खेल रही वेल्स के साथ, 1 घंटे में किक ऑफ है. आ गया होगा ऑलरेडी लाइनअप्स, और वेल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है भाई, संडे के पहले काफी इंपॉर्टेंट है. होप दे डोंट गेट इंजर्ड एनीवन, और टैक्टिकली आल्सो दे जस्ट गेट द मोमेंटम. लेकिन ये मैं दिखाने वाला हूँ अभी. अरे आई होप वीडियो नहीं चले. हाँ, नहीं चल रहा. हाँ चलो, सही है. तो पता नहीं आप लोग देख पा रहे हो कि नहीं. लेट मी ट्राई एंड एनलार्ज इट अ लिटिल बिट. ठीक है, तो ये है अपना ग्रुप A1, फ्रांस, डेनमार्क, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया. तो फॉर एग्जांपल देखिए, लीग ए जो मैं बोला था इंपॉर्टेंट लीग है, इससे ही बेसिकली आपका विनर निकलेगा. तो फ्रांस, डेनमार्क, क्रोएशिया तीनों ही बढ़िया टीम्स है. ऑस्ट्रिया भी आई थिंक दे जस्ट मिस्ड ऑन वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन. ठीक है, तो यू कैन ऑलमोस्ट से दैट जो मैचेस होंगे काफी कंपेटिटिव होंगे अगर डिसेंट टीम्स खिलाएं. स्पेन, पोर्चुगल, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, चारों टीम्स वापस, दे आर राइट अप देयर. इटली, जर्मनी, इंग्लैंड, हंगरी अच्छा की थी. और बाय द वे इस ग्रुप में भी आप देखिए, आई वुड से ये ग्रुप ऑफ डेथ है. क्यों? क्योंकि जर्मनी और हंगरी लास्ट यूरोज में एक ही ग्रुप में थी, जहां तक मुझे याद है. इंग्लैंड भी सेम ग्रुप थी क्या? करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. तो ये लोग एक ही ग्रुप में थे. तो इन स्ट्रेंज है, ग्रुप ऑफ डेथ है विद इटली बीइंग द यूरो चैंप्स. ठीक है, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, पोलैंड और वेल्स, ये आई थिंक थोड़ा ज्यादा डुएबल है फॉर माय टीम नेदरलैंड्स. लेकिन हाँ, आप देखो यार, आउट ऑफ द 16 टीम्स एटलीस्ट 15 टीम ऐसे हैं आप बोलोगे यार दे आर केपेबल टू रीच द सेमीज. और मैं ज्यादा नहीं बोल रहा सच में, मे बी नॉट 15, चलो 13 टीम एटलीस्ट है. तो दैट इज व्हाई नेशंस लीग का कॉम्पिटिटिवनेस तो रहेगा. और बाकी लीग में क्या होगा, आई टेल यू व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट. लीग बी, लीग सी और लीग डी जो आपको दिख रहे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आई थिंक दे विल गेट प्रमोशन टू द लीग ए, और लीग सी वाली टीम लीग बी जाएगी. तो एक year after year एक प्रमोशन होगा. they will get an advantage in the following euros. तो there is more to it. मेरे ख्याल से over the years आप देखोगे ज्यादा नेशंस लीग. I'm just saying it out there. लेकिन हाँ, I agree with Nitesh absolutely. Like बहुत सारा फुटबॉल होता है for players. Yeah, Nigel de Jong is wrongly remembered for the kick. He was a hard-working player at Man City as well. Great compliment. Exactly, Manav. Great point. Thank you for putting it across. यार लॉट ऑफ टाइम्स ना आप एक बार देखते हो प्लेयर को, एक इमेज बना देते हो भाई, उनका करियर बहुत लंबा होता है. तो लेट्स नॉट गो विद दैट. सेम मैं मुझे याद है यार, जिडान को काफी जो मे बी यंग फैंस थे एट द टाइम जब मैं देखता था, बहुत लोग देखते हैं दैट हेडबट और वो पेनेंका जो लिया था, दैट एटीट्यूड, ही दे एसोसिएट जिडान विद दैट. भाई आई वुड से जिडान इज द टॉप 3 मिडफील्डर्स ऑफ ऑल टाइम.
मैं हर एक मैच देखा हुआ उसका ऑलमोस्ट एट रियल मैड्रिड, एट फ्रांस, इन हिज प्राइम. तो मैं बोलूंगा जिडान इज राइट देयर. सो अगेन, डोंट जज पीपल ऑन जस्ट वन और टू इंस्टेंसेस. अर्जेंटीना चांसेस टू विन वर्ल्ड कप. अंशुल, मैंने अर्ली प्रेडिक्शंस किए हैं. डू चेक आउट और इंटरनेशनल फुटबॉल वाला कंटेंट प्लेलिस्ट में मिलेगा आपको सर्टनली. लेकिन मैं वापस से आने वाला हूँ. वी डिड अ क्विक 11 यार. एक यार, हमारे शॉर्ट वीडियोस भी कभी कभी देख लिया करो. काफी काफी इंटरेस्टिंग रहते हैं. ट्रस्ट मी, मैं बोल रहा हूँ खुद ही. ठीक है, वो फैक्ट है. लेकिन हाँ, आई वी ट्राई एंड डू एज मच एज पॉसिबल. तो हम ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पे एक वीडियो निकाले अबाउट 11 पीपल हु मिस द वर्ल्ड कप. तो प्लीज डू चेक इट आउट जस्ट आफ्टर द स्ट्रीम. और हम वहां पर और करेंगे वापस प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन बेसिकली फिनालिसिमा में जो होता है, उसके बाद में जो फॉर्म रहता है, विल डू दैट. लेकिन अंशुल, चांसेस है डेफिनेटली. Ronaldo, I will do the impossible, win Europa with this man, its squad. Oh, okay, interesting. भाई टाइम क्या है? शौर्य, यहाँ तो 8:45 बजने वाले. लेकिन wouldn't it be fair if Euro qualifiers are scrapped off and Nations League is used for the same? That would mean a shorter and less complicated season for the players. Fair enough, मानो fair enough, absolutely. लेकिन again, मतलब आप बहुत बार ऐसे ऐसे बोलते हो ना, बहुत दफा ऐसे बोलते हो प्लेयर्स के लिए गलत है. ओके, थिंक ऑफ अ प्लेयर जो बेसिकली इज नॉट इन द फर्स्ट टीम स्क्वाड. ज्यादा मैचेस, ज्यादा चांसेस आपको अपने नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो आई थिंक ये मॉडर्न डे में काफी ज्यादा बोला जाता है. अगेन मॉडर्न डे में आपके मेडिक्स इतने अच्छे हैं, तो आई थिंक ये काइंड ऑफ टू सम एक्सटेंट बहाने लगते हैं. यस, यूएफा तो और फीफा तो डेफिनेटली पैसे बनाते, दैट इज अ फैक्ट. ठीक है, लेकिन आई थिंक हैविंग अ लार्जर पूल, हैविंग मोर मैचेस, क्योंकि यार एज एन इंटरनेशनल मैनेजर आप तो बोलोगे वी डोंट हैव इनफ मैचेस. आप कितने बार एक्चुअली अपने टीम को एसोसिएट करते हो, साथ में रखते हो. तो आई थिंक फॉर देयर पर्सपेक्टिव अगर आप देखो तो इट इज गुड टू हैव मोर मैचेस फ्रॉम द कोच पर्सपेक्टिव, क्योंकि ज्यादा पूल आपको एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा. ज्यादा प्लेयर्स गेट अ चांस टू रिप्रेजेंट द नेशनल टीम. बट द पीक टॉप प्लेयर्स डोंट लाइक इट, ऑब्वियसली, लाइक अ De Bruyne. You know what I mean? And I agree both the sides. I would rather see more matches. मैं तो सच में बोलूंगा because I'm a fan, I'm not a player. लेकिन हाँ, I agree that they are not having a great time as well. Uh, सादिक भाई, once I get back from a leave plan, do something with you and others on Nations Day. Absolutely भाई, सादिक भाई करना है. सादिक भाई के साथ बहुत सारा कंटेंट करने वाले. भाई सादिक भाई, आज रात को आई डोंट नो इफ यू आर फ्री, फतेह इज कमिंग ऑन, लेट मी नो. मैंने आपको मैसेज करना भूल गया शायद, लेकिन मैं वॉच अलोंग कर रहा हूँ. आई डोंट नो इफ यू आर नॉट डूइंग अ वॉच अलोंग. सादिक भाई, लेट्स जॉइन. 12 बजे हम करने वाले ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस पर एज ऑलवेज. तो हाँ, डू सब्सक्राइब टू दैट चैनल एज वेल पीपल. फतेह आल्सो इज एन अल्ट्रा, तो मजा आने वाला है. तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग सादिक भाई एज वेल. ओके, लेट्स सी. चेल्सी हैव फाउंड मरीना रिप्लेसमेंट. अरे अदबे, ये न्यूज मरीना रिप्लेसमेंट आ गई. मरीना ग्रेनोस किया, देखने तो भाई. सच में कौन है? अदबे, थैंक्स फॉर द कमेंट. लेकिन मैंने शायद, अच्छा, 41 मिनट्स अगो ही हुआ है. चेल्सी ब्लो विद मरीना सेट टू क्विट एट एंड ऑफ ट्रांसफर विंडो एंड एंड्रिया बर्टा फेवरेट. भाई साहब, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अगेन सन का रिपोर्ट है, तो मैं सन का इतना ही, लेकिन नहीं, रिप्लेसमेंट तो डेफिनेटली लग रहा है, क्योंकि फुटबॉल लंदन ने भी किया है कवर. एब्सोल्युटली. अरे भाई साहब, ये तो ब्रेकिंग न्यूज है. थैंक यू पीपल. मतलब आप लोग बोल रहे इतनी देर से, लेकिन अद्वै ने बताया तो मैंने वापस से चेक किया अभी. तो यस, दे आर पोटेंशियली फाइंडिंग अ रिप्लेसमेंट. एनीवन नोज अबाउट एंड्रिया बर्टा? डू लेट मी नो. व्हाट मरीना एंड टॉड बर्ली वाज स्पॉटेड डूइंग अमिड एंड्रिया बर्टा चेल्सी टॉक्स. एक और है, आपका एक पर्टिकुलर वीडियो है, फुटबॉल लंदन ने निकाला है. लेट्स सी हु इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट टर्म. अरे भाई साहब, let's see. It is certain that there will be a change. There will be a change. Atletico Madrid's Andrea Berta. और yes, never looks like दोनों मिले हैं. मरीना एंड एंड्रिया बर्टा साथ में मिले हैं. और obviously there has been some KT, maybe interview, maybe knowledge transfer. क्या आप, पता नहीं, आप बोलो आपको क्या लगता है. But looks like it will be basically Berta जो है, I think has been part of Atletico Madrid. Wow, wow. She's the ideal candidate. And ahead of Monaco's Paul Mitchell. पॉल मिचेल मोनाको के काफी दिनों से लिंक थे, बोथ टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड टू चेल्सी. बट यहाँ पर भाई साहब, Mikhail, big up bro, big up. As in again, Mikhail has helped the channel immensely, not only with this, but ever from day one. So big up to you. Keep the blue flag flying high. Absolutely, man. As in, we have to. And Mikhail, what do you think about this news? Marina, like, I still feel
that it will be as in crime of the highest order to let Marina go right now. I know बहुत सारे arguments है कि Marina should have done better with certain negotiation timing of Rudiger, with Aspilicueta, with maybe a Christensen, not Christensen, but you know what I mean, right? लेकिन हाँ, maybe even in the past certain players. But yeah, Marina knows the club inside out. Burley and co need Marina. Marina was Roman's, right hand woman. She is needed more than Petacek. I think she is needed at least next window tuck. What do you think? I really don't want Marina gone and Andrea Berta isn't good enough. एथलेटिको मैड्रिड क्या की है भाई रिसेंट सीजन में हम सब जानते हैं. अरे आई वुड टेक पॉल मिचेल रादर अगर अवेलेबल है. You are breaking this news for me too bhai. अरे भाई मतलब it's shock man, it's shock. But again, it's not confirmed if Marina is leaving like right now. She is leaving, yes. When is a big question. When is a big question. It will be really interesting. Agar basically I just checked Football London and big up to basically, I think a few people who run Football London. I know them. I actually believe them. Not every article, but again, this one seems like there is a video, there's a picture of Marina along with Berta being there. So I think that is the reason I'm बोल रहा हूँ कि यार Berta might just come. Let's see. As in, quite possible कि यार she's been interviewed and अभी तक हुआ नहीं है. Only reports है. Let's see. कोई नहीं. Let's take a few more comments. What is Nations League, सिद्धार्थ? आपने मिस कर दिया भाई. मैंने बहुत ही प्यार से समझाया था. तो आप प्लीज थोड़ा मे बी 10 मिनट्स पहले रिवाइंड करिए और देखिए और फिर वापस से आइए और यू वॉच दैट लेटर. ठीक है, मैंने बहुत ही प्यार से बहुत सिंपल वर्ड में समझाया था. आई होप एवरीवन गॉट इट बाय द वे. मैंने जो समझाया था. आई थिंक नेशंस लीग इज इंपॉर्टेंट बिकॉज in Europe, national teams only play tournament in 4 years in both World Cups and Euros. Yes, due to Nations League, we can see national teams playing seriously. From national coaches' perspective, I think it's good. It's good. From clubs' coaches' perspective, it's pathetic because इतना ज़्यादा football नहीं चाहिए in off season. Absolutely. लेकिन yeah, by the way, मैंने भूल गया. Mikhail also writes for Chelsea perspective, so big up to Chelsea perspective as well. He knows his stuff, especially Chelsea fans. Please give a follow to Mikhail. Uh, you can follow me or DM me. I'll tell you where Mikhail can be found. Absolutely. Well, let's see. It's a few more. Atletico has signed good players in past. Suarez, Griezmann deal profited. Felix, Rodrigo de Paul. Good point. Again, but have they signed the players जो fit करते हैं एटलेटिको मैड्रिड में इतना ज्यादा? I will argue probably not. Joao Felix does not fit Atletico Madrid. I'm just putting it out there. हाँ, so let's see. As in again, it's about Simeone, how he's used them. So I won't judge them either. That way you have a point certainly. Okay, who was your favorite player when you were in your team? Yeah, okay, good. I'm still in my teens. मैं तो बहुत बार बोलता हूँ 18 साल का हूँ. Just joking. But yeah, fact is like अच्छा, when I started watching football ना, मतलब मैंने एक किया है नो योर क्रिएटर. एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा ऑलमाइटी ब्लूज एफसी में. आप जाके देखिए आपने जब भी फ्री हो. लेकिन क्विकली मैं समराइज करूँ तो आई हैव बेसिकली स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल व्हेन रॉबर्टो बाजियो मिस्ड दैट पेनल्टी फॉर इटली 94 वर्ल्ड कप. हाँ, आई एग्जिस्टेड दैट टाइम. आई एग्जिस्टेड. ठीक है. देन आई डिडंट हैव अ लाइकिंग फॉर इटली और रॉबर्टो बाजियो, बट वो ये इतना बड़ा न्यूज बन गया था, बवाल मच गया था. उस समय होते थे ट्रम्प कार्ड्स होते थे, च्यूइंग गम के साथ हमें मिलता था फुटबॉल कार्ड्स. आई काइंड ऑफ स्टार्टेड वाचिंग फुटबॉल, इंटरनेशनल फुटबॉल थोड़ा बहुत. देन ऑफ कोर्स यूरो 96 था, यूरो 2000 था, उसके बीच में 98 वर्ल्ड कप था, जिडान केम इनटू द फोर. तो आई वॉच्ड लॉट ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एंड मेबी चैंपियंस लीग फुटबॉल. 1999 2000 आई थिंक वाज माय फर्स्ट मैच जब मैं देखा था. आई थिंक इफ आई रिमेंबर राइट इट वाज चेल्सी बार्सिलोना, हाई स्कोरिंग दोनों लेग्स. वो काफी इंटरेस्टिंग गेम था. लेकिन फॉर मी फेवरेट प्लेयर which I really liked. Again, I did not see much of Ruud Gullit or Van Basten. I hope I would have watched them live. लेकिन for me Zola was one player in Chelsea जो मुझे काफी पसंद थे even the last year, क्योंकि Chelsea football club week in week out में शुरू किया था 2002 सीजन के साथ. तो he had that season as well. बहुत अच्छा सीजन. Gronkier had a moment. Wayne Bridge had a moment against Arsenal. Gronkier had against Liverpool. But the guy जिसने मुझे एक्चुअली बनाया है चेल्सी और फुटबॉल फैनेटिक, और ऑफ कोर्स यू कैन आर्ग्यू काका शेवचेंको अगेंस्ट यूवेंटस जो खेला था फाइनल. बिफोर दैट काका इन 2002 वर्ल्ड कप फॉर फ्यू मिनट्स हैड कम इन ब्राजील. बट आई एम कमिंग टू इट. आयरन रॉबिन, ये उसका जर्सी है नेदरलैंड्स का. आयरन रॉबिन इज द गाय ऑलवेज. और मैं तभी टीम्स में था, आई हैव टू से इट. लेट्स सी, कुछ और ले लेते हैं यहाँ पर.
अरे भाई, थैंक यू भाई या बहन जो भी हो, मतलब थैंक्स अ लॉट. If I think DePaul will be good midfielder in Chelsea midfield alongside Kovacic for future. Oh, interesting choice. इंटरेस्टिंग चॉइस आकाश. रोड्रिगो डिपॉल भाई, अगर बर्टा आती है, कैन शी गेट रोड्रिगो डिपॉल? ऑनेस्टली व्हेन इट कम्स टू डायरेक्टर्स ऑफ फुटबॉल, आई हैव नॉट सीन इतना इन्फ्लुएंस. व्हेन दे आर मैनेजर्स का अलग बात होता है, तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आते हैं तो ब्रिलियंट मैन. एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक डू वी हैव एन अर्जेंटाइन. हमारे पास नहीं है. काफी दिन हो गया अर्जेंटाइन खेला है चेल्सी के लिए. कौन थे अर्जेंटाइन चेल्सी के लिए? फ्रैंको डी सांटो याद आ रहा है मुझे. Argentine player. अरे भाई, how can I forget? Willy Caballero. Willy Caballero played, of course. अर्जेंटीना वर्सेस इटली फाइनल. अच्छा, ये आज देखिए फिनलिसिमा, आप देखिए ऑन सोनी. सोनी 10 पे आएगा. सोनी 10 1 2 3 में, 10 3 में तो डेफिनेटली आना चाहिए, लेकिन हाँ 10 1 2 3 और सोनी 6 में से एक आएगा. ठीक है, नहीं तो सोनी लिव. आप चेक करिए, और वॉच अलोंग करना है तो भाई ऑलमाइटी स्पोर्ट्स प्लस लिंक नीचे है. वी हैव 2 चैनल्स, सो डू चेक दैट आउट एब्सोल्युटली. ऑफ कोर्स हिगवाइन था भाई, मैं हिगवाइन. क्रेस्पो ऑफ कोर्स यस्टरडे में वन ऑफ द प्लेयर्स, वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर्स मेरे लिए इन चेल्सीज हिस्ट्री, आई वुड से. Gareth Bale और रोनाल्डिन्हो, रियली रुशिल. Gareth Bale इज ब्रिलियंट, ऑसम प्लेयर. मुझे आज तक याद है इंटर मिलान के जो परफॉर्मेंस था अगेंस्ट अ प्राइम माइकॉन, भाई अलग ही लेवल. लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, रोनाल्डिन्हो मैन, रोनाल्डिन्हो आई थिंक अलोंग विद जिडान, आप देख के वाओ. जोला, रोनाल्डिन्हो, जिडान, मैराडोना, ऑफ कोर्स दोस वर लाइक वाओ वाओ फैक्टर लाते हैं भाई. मतलब कम ऑन, आई हैव टू पुट रोनाल्डिन्हो over Gareth Bale, but Gareth Bale is awesome as well. Uh, of course, man, Michael, come on, man. Michael is always your channel. You don't even need to ask me. I don't know. I don't know if you tweeted or sent me a message. I'm really sorry if you did. But Michael, again, I'm hoping I didn't read his message very late. I'll send you the link like right away. Let me quickly do that, Michael. I'm sending the link to Michael. People, जैसे मैं सेंड कर रहा हूँ वैसे ही क्विकली यार, अगर आपने लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक कर दीजिए स्ट्रीम को. लेट्स गेट टू 350 लाइक्स, एंड लेट्स सब्सक्राइब, क्योंकि यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड ऑन द चैनल. बी इट एनी कंटेंट, वी प्रोवाइड लॉट ऑफ कंटेंट, और भी प्लान्स है ऑन बोथ आवर चैनल्स, सो लिंक्स आर ऑल बिलो. एंड इन केस आपने माइकल टॉक फुटबॉल और मार्कोनी को नहीं किया चेक, सो लेट डू सब्सक्राइब टू देम एज वेल. योर ड्रीम मिडफील्ड नेक्स्ट सीजन फॉर अस. चलो ट्रांसफर्स की बात कर लेते हैं बाय द टाइम माइकल जॉइंस. वेल, अब यार मरीना वाला हो गया है भाई, कोई भी आ जाए. मैं तो बोलता हूँ अगर मरीना दीदी छोड़ रही ना, कोई भी आ जाए, आई वुड हैव अ गिलमोर स्टार्टिंग. लेकिन हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग, ड्रीम की बात करें तो लाइक आई वांट अ 4-3-3. आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट. बहुत टाइम लगे ना, वेरियस चैनल्स इंक्लूडिंग माइन, मैंने बोला है 4-3-3 चेल्सी को जाना चाहिए. आई कैन नॉट सी चेल्सी काइंड ऑफ continuing to dominate Europe the way that we have been trying to do in this way, or even in England we are nowhere close near a Man City and Liverpool. वो सच्चाई है, तो हमें जाना चाहिए. नॉट बिकॉज वो लोग जा रहे हैं, द फैक्ट इज भाई आपका 4-3-3 ज्यादा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ला सकता है. यू कैन प्ले अ 4-2-3-1, यू कैन प्ले अ 4-3-2-1 जो एसी मिलान खेलती थी, क्रिसमस ट्री फॉर्मेशन. तो काफी सारे फॉर्मेशन, यू कैन बी डिफेंसिव एज वेल विद द क्रिसमस ट्री फॉर्मेशन. 4-3-2-1 will not be bad either, or 4-2-3-1, one of the two. So I would say definitely Declan Rice, क्योंकि Chouameni, I'm being realistic, नहीं अवेलेबल है. हाँ, Bellingham for future, लेकिन Declan Rice अभी के लिए I think he's almost reaching his prime. Declan Rice is a DM. Beside him you have Kante and Kovacic, or Mount or Gallagher. That is what rotate करो. ठीक है, that's what I would say. So that is my ideal midfield. Honestly speaking, I would take that any day. बैलोटोली के बारे में कुछ बोलो. चलो बात करते हैं, but let me welcome Michael bro, long time no see. How are you? Good, man. How about you? How you doing? I'm surviving from Saturday. I'm still in the morning, but we're getting past it. I was kind of, because my that's the reason I didn't contact you the other day. I was like, okay, let him get over that. We'll probably have major discussions, as a Nations League and stuff picks up, right? Yep. Oh yes, I think Michael is also doing. We are also doing. Are you doing a watch along? No? I'm doing the watch along, yeah, for Ukraine, Scotland. Yep. Perfect. Even we'll be doing, so people, if you can just rotate between the three of our channels, and all three channels are linked below. Again, quickly, Michael, obviously talking about that big game, Scotland, Ukraine. I think a lot has been made of what Ukraine has gone through. We all know that. Zinchenko in tears in the interview again pre-match. But like
the fact that you said Ukraine haven't played much football, like it's got to go against them, and tactically, are they going to be just playing for maybe? Is there extra time? I think there'll be extra time and penalties, right? If it's basically ending. Yeah, there's extra time and penalties. Yep. So what are you saying? Like, what could be the best way for Ukraine to get the better of Scotland here? I mean, if you look on paper, you would say Ukraine have better like individual players, right? You got Zinchenko, who plays in a much more attacking role. You have obviously Mykolenko, who's been good at Everton. I think he's improved since joining them. Malinovsky, if he starts, Malinovsky has actually been selected a lot for Ukraine the last couple of months because of some issues with the manager and stuff like that. And then you have obviously Yaremchuk, who's been a big disappointment at Benfica. So I think they actually have better individual quality, Ukraine, but now they haven't played a game since December, most of these guys. Because the Ukrainian league, they took a break in December because obviously winter, here in Eastern Europe and Northern Europe, it is pretty brutal and you cannot play. So then obviously they were going to start, but then 2 days before they were going to start, the war broke out. And then, some of these guys haven't played. They've only played three friendlies, if I'm not mistaken, most of these Ukrainian players. So it's going to be really interesting to see. Ankit, and obviously everybody knows, there's a different kind of motivation for them. It doesn't matter if they're not match sharp. They're going to have a sort of mentality. The whole country's behind them, no matter what's going on. And that's, I think, it's going to feed them into the players. And I think, Zinchenko looks like he just looks broken every time he talks about it, which I can fully understand. But I think from Scotland's perspective, they got to be, a little bit worried. They have a lot of pressure under them. Mm-hmm. They're the home team. They don't lose a lot of home games, Scotland. So they got to be careful with no Tierney as well. And McTominay probably playing at center back because he usually plays central center back for Scotland. So he plays center back, exactly. But he's not. He's good at center back, and usually they play a 5 in the back formation, Scotland. So Robertson's going to get really far forward. But let's see how good Robertson's going to be because he looked very fatigued in the last couple of weeks. So I'm really excited, to be honest, not just because of the football, but just the whole aspect around it. It's just a very fascinating matchup to me. You know what? I didn't even know Italy-Argentina was going to happen today, to be honest, until I saw. Oh yeah, that's just it's a glorified way of putting. It's money. I think you didn't have the Confederations Cup, and and you just made one thing, and you're kind of milking Messi's popularity in the fact that Italy haven't reached the World Cup as in finals this time around. So that's the real picture, and that's something that we already spoke. But again, as a fan, I wouldn't mind bring it on more football. As in, of course, for players it's not good, but you know what I mean, right? And for Italy, I think it can be good because they can still win a cup and get their confidence back. But in case they lose on heartbreak again, it might go the other way around. Who knows? That it can go to penalties that game. I think it can go to penalties. Exactly, directly. Yeah. I mean, I won't watch the game because there's Immobile as striker, and anytime he plays for Italy, I can't watch it. I just can't watch. It's brutal. I think they've got to move on, man. They've got to move on, and with this Kamasa is something that I'm looking at. Is probably the one. I think Raspadori can also kind of pitch in. They need to play something like that rather than they should bring Balotelli back. He is doing well, right? Apparently, I think he saw a goal. Oh man, that was like viral, man. The recent goal that is scored. Step overs in the Rabona. Oh my God, stop it, stop it, Balotelli. Honestly, he would probably be their starting striker, if him or Scamacca. Because you can't trust Belotti and you can't trust Immobile. I almost called him Immobile because that's what he is. Because that's what he is for the Italian national team. I swear, like he could score all these goals for Lazio. Good for you. What does it give to Lazio? It didn't give them any trophies. Gave them Champions League football, and he did pretty much nothing at the Euros except I think score one or two goals. That's it. And the reality is, like, people, I know will say that it counts, but the fact is he takes a lot of penalties. And that's actual reality if you actually see the stats carefully. But again, nothing against them. Like again, coming back to the comments, there was a question about Ankit. How can I help you? Like again, just follow the channel. Just follow the channels that I recommend. You can find Michael Talk Football is one of them, and of course Almighty Sports Plus. Other channels are very close to 3K. So let's get there. We have actually become 3K, and of course there are always haters, and they unsubscribed, and we went back. So Michael has just reached 3K. Let him get up as well. This guy deserves a lot. And again, not just Michael, Markaroni, anyone that we kind of feature. Hopefully you guys can just be there, support us, and of course put in your comments. Yeah.
if you can afford it, there's a way to super chat on this channel. But again, I wouldn't like kind of ask for it if only you can, right? But of course, that helps because it goes back to the channel as investment. Views on Kostic, as in this guy linked to how is Conte getting the players that he's getting, man? As in, come on, like Perisic played under him and all that, but Bastoni, very, very, as in possible, looks like, and Kostic, they are still going for as well, even after getting Perisic. If they get Bastoni, that's worrying. That's very worrying. Can you imagine him? Actually, you know what, Eric Dyer, fair play to him. He's gone much better. Then you got Christian Romero on the other side. Oh my God, Spurs. They might not have the squad to compete, but they can definitely win a cup for finally, and that's all they want. They just want to win a cup, and that's the main thing for them. Absolutely, absolutely. Michael, thoughts on Finland versus Bosnia or Herzegovina? Again, you know, this is like the 6th time we've played them in the last 4 years. And I'm going to the game. Yeah, I'm going to the game. And it's supposed to be pouring rain, so that should be really fun to attend as well. So, yeah, I'm going to the game, and hopefully we can get the win. I mean, we've gotten better at Bosnia in the last couple of times, so hopefully we can continue that and somehow make it to League A. I mean, it would be ridiculous to see Finland in League A. We started in League C in the Nations League, and that's really because people, you know, I see people saying Nations League is a B-Tech friendlies, and of course, if you don't live in Europe, you don't quite understand the concept of it. But personally, for me, from Finland, that helped us qualify to the Euros. That's what I said. Like, you know, you might feel in the long term, I think it's just the third time that it's happening, so people are not really, you know, feeling it. But I think the more it happens, an automatic kind of qualification or seedings even help, right? So that is something that I think it will really help, absolutely. So, like I said, in Finland, you can see, you know, Michael is Finnish and he himself is wanting, you know, his country to kind of get to the League A. So that is the target. But coming to this, I have to speak to you about Michael quickly because breaking news that Marina was spotted along with Berta of Atletico Madrid. So Marina might leave, and Berta probably is being interviewed or being succeeded. I think we were very strongly linked along with Manchester United. Sadiq Bhai saying to Paul Mitchell of Monaco. For some strange reason, I don't think we're going for him, and we're rather going with Berta, who is again being a lady, and Marina maybe be able to kind of explain how she went about things at Chelsea. I don't know. I'm just kind of putting it out there. But in case, again, I'm hoping that Marina stays at least for this summer. That is something of a must with Burley coming in. But in case, say Berta comes in, what has she done in Atletico Madrid? Like, what do you see? As in, will it really affect Chelsea badly, or it's a good thing that it's time for a change at Chelsea at all fronts? I think it would be a good signing. I mean, look, she's got. I mean, the person at Atletico, I've never heard of them, by the way, so I have no clue who they are. But if you look at the signings that they have made, other than giving João Felix an 8-year deal and basically handcuffing him to Madrid for that many years, I think they've done pretty good business. You're getting Trippier. You get, obviously, Rodrigo de Paul. I absolutely love the player. Still love him. I think Simeone is going to destroy his career, by the way, because he's fantastic. So if you look at the recruiting of Atletico, it's actually very good. So maybe they can, with a bigger budget at Chelsea, maybe you get some more resources. Who knows? Maybe it could be a good thing. But, Ankit, I have a question for you because I haven't actually asked a lot of Chelsea fans. Realistically, how many signings do you think you're going to get this summer? Listen, our almost 70% of our backline is missing in terms of the starters, right? Two of the back three. As in, imagine, like, again, I still have my hopes with Azpilicueta. Yeah, he's not going to start. I'm not telling, but the fact is, like, what John Terry played the role in 2017 with the squad, he was essential. Conte is on record. Azpilicueta is huge in this because, bro, we don't have a captain. Jorginho might leave. Okay, Rudiger is gone, captain of the pitch. Then Azpilicueta might leave. Alonso, yes, he's nowhere close to a captain, but he's there for many years. So I would still count him as the senior player. So 4 players already. Thiago Silva possibly playing his last year. Kante hasn't been Kante. He's been like Kante's twin brother or someone. I don't know who's playing for Chelsea last few months. So it's been really missing. So I would say definitely 100% we need to keep Azpilicueta. So assuming that we keep him in the squad, and Chalobah's done decently. Levi Colwill, despite his own goal, I would get him. The loan army helps. We need bodies, and I'm kind of going on record that we need to go for the back. It's a brilliant excuse for Tuchel to go for 4-3-3. What he used to love at Dortmund, what he did at PSG to a certain degree, of success. So I would say certainly go for the back. Thiago Silva, Chalobah, put in basically Levi Colwill and get one proper centre half who is experienced as well.
I have no idea. Again, nothing against Man United fans. Sadiq Bhai is in the house. I have no idea why Pau Torres at this point in time will play for Man United versus Chelsea. I have no idea. Like, again, I might be wrong. Respect to Man United, the biggest club in England, arguably. But I would say that last 10 years, really, any player should get attracted to Chelsea despite the new owners. I really feel so, with Champions League football in particular. So Pau Torres is ideal. You would say Koulibaly, but again, Koulibaly, I don't think he has maximum 2-3 years max. Pau Torres has far more. So I would rather have, and he can play with the left foot. So if we go three at the back, Pau Torres. So I think one left center half definitely is realistic. So I am going for Pau Torres, but I think Guardiola is the guy that Tuchel probably wants and is more realistic. I know he's also gone and saying that he'll probably stay in Leipzig. The other guy that I really would want, I know Jules Koundé is someone that we've been linked forever. Talks have been going forever. I don't think he's worth 70 million. I don't think so. If Marina is able to convince Sevilla, who's really difficult to argue or negotiate for 50 million, so be it. I'm not going to pay more than 50 million for Jules Koundé. He's great, but he's not worth 70 million. And maybe a Declan Rice. I've called it. Declan Rice is a must. 80 million max. 80 million max. Oh, so yeah. 80 million, 50 million, maybe 50 million. So that's what? 180. And then get Dembele on a free with paying him high wages. That's my window. That's a lot of money spent. You heard it. Keep Lukaku. That's a lot of money spent, Ankit. My God. No, we do have I think arguably, I think we have a 200 million kitty, especially since we are also going to be having Jorginho being sold and things like that, right? So I'm still looking at where's Jorginho going to go? Juventus is what is the strong links from a few months, in fact. So let's see. Well, how many midfielders are Juventus going to sign this summer? Don't they already have? I don't understand Juventus, man. Well, I don't by get the way, it. I didn't body Man United, man. People, that's why I say always, don't go by moments. Follow my content inside out. You'll know. I mean, come on. I didn't mean that. To be fair, Ankit, remember the last time United were in the Europa League, they signed Paul Pogba. Yeah, and it's gone. And I don't know, man. And then people say Pogba, Kante, maybe they kind of, again, both of them will come up. I don't think football works that way, right? No. As in, I don't think that there's an option even. Problem is his attitude. Like, just like a Lukaku, I would say, like, he did not have the right attitude at United, very honestly speaking. What do you think was the main reason? Injuries as well, but... I mean, injuries, yes. I just think there wasn't really a long-term plan at United when he was there. And Fellaini, Herrera, these were the sort of midfielders around Pogba. You're not going to get the best out of Pogba. I'm sorry. When he has to do all the work around these not so talented footballers, to be honest. And I just think the injuries, yes, he had a couple of good moments and he won two trophies, but I just think Pogba and the United, I think it was the best thing to just go for a new beginning. The most scariest thing for United fans is if Pogba goes to another Premier League club and he does well, then they're really going to be pissed off at him because they were pissed off. They paid, 90 million for him at the time, if I'm not mistaken. I think it was like 90 million. They broke the English record, right, at the time. Yeah, I think it was an English record. Oh my God, 90 million for Pogba at the time. Holy cow, it was a lot of money. But yeah, I just wonder, why would you go back to Juventus though? Juventus are on a long-term plan. They're not going to win Serie A next season, right? The defense is old, and they're not recognizing the positions that they're weak at. They're just strengthening their midfield when they already have Weston McKennie. They have already Arthur. They already have. I can't remember the other guy's name. They have Rabiot. What was it? The Italian CDM. Rabiot and the Italian guy's name. What was his name again? The CDM. He came from Sassuolo last season. Oh my God, I cannot remember his name. Oh, it's really. Who's that? I'm kind of. But yeah, anyways, they have like 4 midfielders already, and then they want to get Jorginho and Pogba. Mm-hmm. They need to strengthen their left back. They need to strengthen their center backs. They need to get a left winger. I don't understand what Juventus is doing. Oh, you mean Locatelli? They're just splashing the cash for no reason. Locatelli, there we go. Yeah, that's the name. Oh man, I forgot about that. Yeah, but I just don't get it. But look, it's good. It's good, man. I'm happy for Pogba to get out of there. I just think it's best for his career, and clearly him and the English media don't go well with each other. They're just constantly putting pressure on him, constantly criticizing his haircuts, constantly criticizing anything he does. I think he's done with English media, in my opinion. I would be as well if I was getting criticized for my haircuts. Come on. I just had a haircut, by the way. I got a lot of comments today. I'm like, no, it's off-season, man. Let me just get a haircut.
But Michael, suppose obviously a Champions League finalist, put it that way, who didn't have the great side of the result, but of course, a Liverpool fan who knows his stuff inside out though. So don't worry about that. Like, in one question which was here about Emerson, yeah, people are thinking that I didn't go for a left back option in the signing that I mentioned. The fact that again Guardiola can play left back also is one of the things. In 4-3-3 formation he can play. He has played left back for Croatia, if you notice the Euros last season. But for me, Emerson has got to come back. I think the guy needs to be told that, hey, you got to get a few games for sure. I know he's gone on record saying that he's got a lot of love and Leon and all those things, but come on, man, you're a footballer, you're a professional. Alonso, time has come that we need to say goodbye to him. He probably wants to move himself. We rather focus on, maybe, I know that we needed a backup last season, but come on, not every season we're going to get Ben Chilwell and Reece James being out at the same time. And of course, there's a big if Ben Chilwell, would he be able to get back to full fitness? So, Michael, where are you on the fitness things? Like, after such a major injury, do Chelsea kind of invest in a new player or just back the player, right? As in, come on. Back to player. Why would Liverpool sign another? Well, they signed Konate, but they realized they needed a backup to Van Dijk and Matip after what happened last season. I think Emerson's decent. Obviously, he shouldn't be starting every game, but he can come in and do a job for a couple matches, but then bring back Chilwell after like a certain injury. How long is he out for, Chilwell? Because I know it was a serious He's already out. He's already in, by the way. He actually featured, I think, for a few minutes in the last game of the season. So he's back. Oh, okay. So that's a great news. But again, to full fitness, I would say probably by the end of preseason at best. I don't see him being fully fit. It's just that I think it was more like an emotional thing in front of the fans. Getting him to get a few minutes. I think that was the thing. He started just training. So, but again, I think Erik ten Hag. It's about how the managers plan, and that's what is coming out to Tuchel as well as basically Erik ten Hag, because I think it's a season of change for both the clubs here. It'll be a lot of change. But here, it's interesting. Rabiot is being sold. Where is Rabiot being sold? Because he was also linked to Chelsea. Remember, Michael, we spoke, I remember in detail, that why is Rabiot being played as a winger at Juventus? Well, they didn't have any other options, to be honest. At that point in time, exactly. Yeah. But Rabiot is not a bad option. I think he played under Tuchel at PSG, if I remember right. I probably think he did one season. I don't. Did he? I think he did. Didn't he move to Juventus before 1920 season? If I'm not mistaken. Maybe I'm wrong. Again, people in the comments do correct me if I'm wrong. Yeah, but I'm not too sure either. But Rabiot is a person who can play in central midfield, especially if he changed to for the back. He can be a brilliant number 8 as well. No? Yeah, I would take him if I'm Chelsea. Give you more options in the midfield, because you can clearly see Jorginho. I don't think he's the guy. I just don't think he's the guy, to be honest. Especially if you're having a single pivot, come on. Like, no way. As much as Italy plays very differently. You cannot play that way. As in, come on, we're not going to do that. Jorginho has a role in Italy. Absolutely. But yes, Juventus also. I think with Juventus, one of the reasons why they are just signing for the sake of it, you can say, because they haven't got their first teamers. A lot of them, like you said, McKennie out, Chiesa out. They got a few injuries as well. I think they didn't get a chance to kind of gel together in a strange way. So I think again they've got a transition season just gone by. So I think now they're just trying to basically fit the rest of the puzzle and then go for it, because they have to do something major. As in Milan, would you say that was a one-off the season that they had, or they are back, right? Oh yeah, they got the money. They got the American money. The same people who are in. They actually own a stock in FSG, if I'm not mistaken, or they're in collaboration with them. So they know what they're doing. And I already saw rumors of maybe even Bale going to AC Milan. Ankit. Wow. And I think we were talking the other day. As in, there was a question. Honestly, I wouldn't. The only reason is on quality, brilliant. I know he had problems at Madrid off the field. But I think his attitude, I have to question it, man. I have to question the guy's attitude. Come on, you cannot think that you're bigger than the club. Exactly. You're not there for that. You're being paid as in huge bucks, not even big bucks. So I don't think you can do that. So I would not want such a player. And I'm actually telling. I know Bayern probably going to be giving Lewandowski to Barca. Looks like it from what things like after Sadio Mane moved. No, I'm just. I just read a couple of days ago that Barca have some $500 million in losses or something, not losses, but they're in financial. But they got a new deal, right? Yesterday, CVC deal or something. I'm not sure. Barca fans, you might want to help me there. I mean, what is a lot of loans that they're going with? I don't know.
I need to understand where this money is coming from. I really do. This is getting really dodgy at the moment. It really is. But It's a hey, new sponsor, mate. That's as simple as that. I guess that Spotify money is good for them, especially. I don't know if I think the Spotify deal went through. I'm not too sure, but Yeah, Spotify went through. It's basically yeah, now Spotify Camp Nou, if I'm not wrong. They changing the name of the stadium yeah, also Spotify. officially. Yeah. They'll play Shakira's "My Hips Don't Lie" when in the intro music instead of Visca Barca or something like that. But I mean, if Lewandowski goes to Barca, that's a great signing. But I still look at their defense, and if you're going to sign Marcos Alonso to be a backup and Christensen, you're still not good in the center backs, in my opinion. Araujo's No, great. Piqué was good, but Piqué is getting old. see, their idea is just like what Chelsea have been trying to do unsuccessfully. They have been doing successfully. What they're trying is people who are unhappy at their clubs or people who are kind of ending the contracts. Let's get them because it'll be an easier kind of a negotiation when it comes to the wages, which already is very high. Absolutely, CVC deals is Akshay is saying, but we are going to get 740 million if Socios approved a deal on 16 June, and I believe that is a CVC deal that he's talking about. Part is a Barca fan. Oh my God! They better not spend that money crazy, otherwise they'll be in more financial debt in the future. They got to spend it wisely now, and they have to redevelop the stadium. Oh yeah, they have, and Chelsea have as well. By the way, they have something. That was one of the deals, for the ownership to get through. So the problem is even 16 June tak hua na, part even that is an issue because imagine that like we saw with Chelsea losing players, we couldn't talk to players officially because we didn't have an owner until last week, right? So I think 16 June also is a problem. The way things are going, it's a mad transfer window already. It's going to be probably one of the maddest transfer windows that we've ever seen. Like Sadio Mane, as in telling that he's leaving, and that came as a shock to me. I know I called it that he's probably going to be leaving, but so soon, just right after the Champions League final, did you anticipate that, or you thought that there will be a lot of talks? I mean, when he made those comments before the Champions League final, I knew, this is not looking good. He might be going. I'm just shocked it's Bayern. I'm really because he wants to probably get paid, and if he wants to get 300,000 a week, I'm surprised Bayern are paying that money. I really am. That's the biggest shock to me. But if Sadio wants to go, I can't blame him. If he feels disrespected, I can't blame him either. The limelight hasn't been on him a lot during his Liverpool career. At the beginning, of course, when it was Jurgen Klopp's first major signing, then the players started coming through. Sadio Mane was the key guy in that first full season under Klopp. So I will forever cherish the moments of Mane and what he has done for Liverpool. But if he wants to go, just let him go. Why keep him if he's going to be unhappy and you're going to keep him for another year and then he's going to go on a free? Makes no sense from a business and from a club's perspective. So, look, it's going to be sad, and I just wonder who we're going to replace him because if we get Nunes, that's not good enough. No, but aren't you convinced of Jota being your starter in 30 Premier League games a season? No. No, okay. I'm not convinced of Jota. I just don't think his link-up play is the greatest. He can be a poacher, that is good, but I don't think he can play 38 games and be that prolific guy for us. That's just my opinion. Yeah, because I agree where you're coming from, but at the same time, I see Jota as more like a striker than a winger. Yeah, I think that probably you'll agree, right? He's probably a fox in the box is what the best way I put it. Jota is one of them. Which probably Chelsea needed last couple of years, and we probably ended up with the Werner there, just going back. But again, Luis Diaz also, he can play number 9, but surely you wouldn't take that quality from him. He's going to be a left winger, as in he's. Oh yeah, 100% left winger. Exactly, and Salah also, he's as much as you say that he's scoring a lot of goals, he's your right winger who scores goals, and that's what he calls himself as well. So it's interesting, but again, I think if I'm not wrong, it's between Barca, if they're paying the money, Liverpool and Chelsea about Lewandowski. So would you see Lewandowski? Please give me Lewandowski, please, please. Oh, I would die if Liverpool signed. I don't even care if it's for 2 to 3 years. I'll take him, please. Yeah. Okay, Michael is probably singing my tune here because I just went on a mini rant there that why is Chelsea having those 30 plus? You know that 30 plus thing that we have, right? Oh yeah, we don't sign 30 plus as in players on maybe a long-term deal or whatnot. It doesn't matter, man. Thiago Silva's proven that, Ronaldo's proven that. The fact that the guy is the best even today, I think it's all about that, and it hasn't worked. When was the last time Chelsea won the league? It's been a while. Exactly. Michael's thinking that 2017, 5 years, right? Yep, 2017. So basically,
it hasn't worked, and this kind of scheme came, I think, about the same time. So we got to change that. It's not working. So we got to go back to what we used to sign. Remember Michael? We signed Michael Ballack Yeah. at 30. I know he was a What a player. midfielder, but very different. Zola back in the day, man, he was signed at what, I think 31, if I'm not wrong. Yeah, And I think he was quite spent old like when he 7 came to years. Chelsea. So I think times have changed, but again, I think we really need to change that. Okay, Aryan saying, personally, as a football fan, I don't want the CVC deal to complete. I don't want a football club to be burdened by such deal. I don't know about burden, man. As in, if you're getting the money, which football club is going to say no? Put it that Especially way. nowadays. Exactly, man. Leva will go to Barca. So Koulibaly, Leva, and pretty sure they need to get rid of De Jong. Then I'm pretty sure they're Yeah, not they able to have afford to. all of them. And Kessie, remember? Oh yeah, Kessie, of course, they got it. Absolutely. How about selling Mane and replacing him with Dembele? He's quite having the fitness of his life after match. Yeah, Dembele is the right winger, really. But I hear you from what you're saying. Enjoy life. The name itself says. There you go. Exactly. You guys to corner quickly, but not this time. I want to Barca. Oh my God. Still salty. That's a Yeah, good one. still That's a good salty. one. Absolutely. They're But all again, salty. yeah, Hey, brilliant chat. And again, like as a Chelsea fan, as a Milan fan, I can just hope for good times. Michael, to before ending the stream, as a Liverpool fan, what are you looking at? Like, what is your ideal striker to replace Mane now? Lewandowski. That's all I No, want. he's out of syllabus. He's not even Okay. counted. Okay. So if I cannot get Lewandowski, who would be my number one priority, there isn't really a lot of strikers to go at, There really isn't. I think So, Nunes is a one-season wonder. I need to see him to do it more because but he had a good season at Segunda División, went to Benfica, had one bad season. The next season, this season, has been brilliant. That's one season. I don't want a one-season wonder. Sheik, one-season wonder. There really isn't strikers. yeah, That's the problem. No, but I don't know who to go for. It can be a great timing, Okay. Michael. I'll tell you why. Bobby Firmino, he had an on and off season because of his injuries or because of basically the form of. He's his at the performance. downfall of his career. But maybe on the other hand, you can say like maybe I'm just putting it out there. Maybe like a Modric, he comes back, and that's because last season he didn't overwork himself, and he comes back, and because he is one guy who also links up with the midfield, and he lets basically Luis Diaz and Salah be those false two strikers, and that is how you play. And Darwin Núñez will not be a bad backup if he's okay with that. He gets even mentored under Firmino. I'm just kind of putting it out there. I just want to go for Nunes. That really isn't. That's not the guy. I think right now. If he goes somewhere else and is brilliant, then we've effed up there. But for me, I just don't think he's ready yet to take that next step at Liverpool. Ankit, we didn't score in 3 finals. We need to get a proven goal scorer at the moment. Yes, Jota has done well, but Jota since Mane and Salah have come back from AFCON hasn't been good enough for him. So I don't really know what Liverpool are going to do. If I'm Liverpool, I would just go everything at Lewandowski and see if he wants to come. Reunite with Klopp. Get the good times back. Yeah. By the way, yes, Poland versus Wales is soon, and let me quickly share the lineup here for people who are interested. Again, this one, let's be honest, like Poland Wales, like again talking about glorified friendlies, and this one probably is important more to Wales, just about than Poland because of the fact that Wales are playing on Sunday, right, Michael? So I think they'll probably be resting guys then. Yeah, at the same time, maybe tactically, might just help because it's been a while since they've played a proper game. I don't know. What do you think of this? Like maybe Dan James starts on Sunday? No. Oh yeah, probably will start Sunday, but that's the only guy I think starts from this lineup. Maybe Chris Mepham. That's it. That's it from this lineup. Yeah, I think Kiefer Moore had a decent Euros, if I remember right. Yep. Danny Ward, shout out to him, of course, being a Liverpool fan, you probably relate there. Backup Leicester. Exactly. But again, Robert Lewandowski playing, that'll be interesting. But what are your predictions on this one? I think again, this is the Nations League first game tonight for League A. What are you going for? 3-1 Poland. They should win this game comfortably. They're probably going to try some new tactics out and obviously prepare for the World Cup. Yeah, fair enough. Nkunku to Liverpool. Like I have said that I want him at Chelsea, but again, are you convinced enough to do that? Basically, are you weary of getting people from the Bundesliga if not for Lewandowski? Oh yeah, I would take Nkunku, of course. Didn't De Bruyne come from the Bundesliga? Yeah, come on. You can't really say that Bundesliga. He was already good at Genk.
He's already very good. Okay, but then he went to Chelsea and he wasn't good That because you was, guys no, didn't give him no opportunity. I would argue that we didn't give him opportunities. I think that Okay. even in the Hull City game, the game that he played, I think it was the first match, Premier League match of the season he started, and Jose Okay. Mourinho got a lot of work rate as well as long shots. The problem was he didn't continue that work rate in the following. I think it was a cup game and where he had the falling off from with Jose Mourinho, and after that he was like gone. But for me, like how many Bundesliga players have really done well in the Premier League in recent times? Like it's difficult for me to even think about it. Sancho also he took a lot of time. Gundogan, Yeah, Gundogan, absolutely. Yeah, I think you Kai probably have a Havertz. point. Would you say he's done well somewhat Yeah, in patches? at least second season is much far better. I would agree there, absolutely. Like I was saying Nkunku as well, but do you need Nkunku? Is he not better on the right hand side than left naturally? No, but he's very versatile and he's played mostly Correct. this season as a false nine. I would take Nkunku as well, but I think he's more. I think he really wants to go to PSG. He wants to return home to. So if we're competing with PSG, yeah, we got no chance because we don't got the money. Exactly. True that. Yeah, thoughts on Julian Timber to Man United. I think they better get it done because they're getting linked with every player out there. They got to move on to a DM, man. I'm still shocked, man. As in, why are they putting all their eggs in the basket of De Jong? I don't know. Like that may not be done. I know that talks have started, but I think for me it was not even a doubt that DM is what they need, right? Yeah, 100%. I don't know what Man United are doing. I'll wait till the end of the summer to talk about them because they're just linked to this guy, that guy, this guy. They're probably going to be linked to me and you soon, Ankit. At this point, Barca were there. We were almost saying that Ankit to Barca was on. Absolutely. But by the way, I'm looking at almost 115 people watching. Thanks for coming on. Do not forget, there are watch alongs tonight on both our channels and, of course, Markaroni as well. So if you can just alternate between our channels, absolutely brilliant. It's starting at 12. We are covering both the games, that is Finalissima and, of course, the big World Cup qualification games, the semis, playoff. So you will be there. Do not forget to like and subscribe on either of our channels as well. All the links are tagged below. Michael Talks Football is very easy to find. I'll probably show the name of Michael so that people can go right away. Okay, he's just named Michael. So Michael is named and Michael Talks Football, right? That's what his channel name is. I think if I'm not wrong, let me actually put it here. Yeah. So you can see below, scrolling below, it's Markaroni, Michael Talks Football, Almighty Blues FC, and Almighty Sports Plus. We are very close to 3K on Almighty Sports Plus. So hopefully by the time the stream is over, you guys get us there. And do not forget to like. Let's get the likes up to 350 as well. João Pedro to Liverpool. Reaction. is that the guy from Cagliari? No, I think if No, wasn't João Pedro the Watford guy? Oh, the Watford dude. Okay, because I was thinking of the Cagliari guy because I think his name is João Pedro as well. No, I wouldn't take him from Watford, to be honest. I wouldn't. I think he's had a couple of good games, but otherwise, not the greatest. So probably. I think it was Ismail Assar who was really linked to you guys as well, but his form is dipped. His form is dipped this season. Well, I mean, he's at Watford, so what do you expect? I'll take that any day. But anyway, shocked. Okay, how about the right back? I think a lot of people are trying to get this conversation between the two of us. Walker versus Trent versus the Reece James. But again, it's kind of early. Let's see what happens in the Nations League. But what's your call, man? As in, pretty sure he's going to try Trent in midfield once again in the Nations League, right? Yeah, I think he'll try Trent in the midfield. Why not? To be honest, because he's going to play Walker at right center back, and I think he's going to start Reece James at right wing back. I think that's what Southgate is going to do. I just don't think he trusts Trent that much defensively. And Southgate, defensive stability first, and then we'll worry about attack later. So I think he's going to start with Reece at right wing back. Even though I think Trent would be better in that position, but that's just my opinion. That's all I'm going to say. Yeah, again, like a lot of players, as in leaving Atletico possibly this season. Correa is one of them who's been touted to be leaving. As in, he has a goal in him. He has a fantastic goal in him at times. I know that. Yep. But is he a reliable player for the Premier League? I have my doubts given his physique. Yeah. That's the only thing for me. And I think again, Skamaka, brilliant. But again, like Michael said, a lot of people have done well for 1 or 2 seasons. Would like to see them more. Or maybe could he reach the Vlahovic level? I really don't think so. I don't think so. Correct. Fair enough. How about Belotti even a free? No. If you even give me money, I won't take him. No. I would never take Belotti. Never. We were ever.
we were so strongly linked with this guy, Belotti at one point in time. I remember. And thank goodness we didn't get him, man. And then talk about our Yeah. strikers having the curse. I think Belotti would have taken that to the next level. Oh yeah. What could be the potential replacement? Like, I think Guardiola is the guy we spoke about already. I think Pau Torres is someone that I would like. But I think Bremer is someone, I think we're from Torino, we've been linked in the last month. He has a decent kind of a record. But again, I think he was Serie A defender of the season, if I remember right. But Yeah, he again, is. has he proven enough over a long period? I don't think so. He's different than Rudiger. He's not going to be like that Italian, league defender who's coming in just like Rudiger. So I am having him maybe at fourth or fifth option. But again, Koulibaly, I don't mind, but not ideal. Again, let's see. No matter who Southgate plays, Maguire will steal the show. Exactly. Enjoy life. You have a point, absolutely. But again, brilliant, man. And then almost 2 hours. We've been here. Michael, thanks for stepping on. Always good to have you. So, what's your call? Wales going through on Yeah, Sunday? I think Wales are gonna win at home. Bale, when that guy plays for Wales, he is a completely different player. Then he shows like he's a top 10 player in the world. Then he's at Real Madrid, gets the golf clubs out, gets the nice hat on. He enjoys life. So I think Wales. If it's Scotland, oh my god, that's going to be intense. And if it's Ukraine, it's also going to be intense. So I think Scotland are going to win tonight. I think it's going to be 1-0. We're going to get an all British final. But being at home, Wales, they're going to qualify to the World Cup. And as a half American and having to support the United States national team, we are going to finish last in that group if that is the case with the way things are going. Interesting. Let's see. By the way, I'm seeing like almost 750, in fact, almost 800 votes, but I'm seeing only 300 likes. So if you can get up the likes even more by the time we end the stream, or maybe people watching later, hopefully we can get to 350. And do not forget, people, you can see the channel links below. That is right in the description, but even the channel names are here on the screen. Markaroni, obviously, he was here. Big up to him. Michael Talks Football. You can watch him. You know that this guy knows everything, literally. Almighty Blues FC, Almighty Sports Plus, we are also getting there. Absolutely. So let's get there. It's going to be a mad summer and a mad year because of international football. I was one who was like, I remember talking to Michael about, come on, Nations League and stuff like that is not there. But I think this year it clearly shows that things do work. It kind of affects on your club career as well for players. It happened for Benzema in a way. After that, he was great. Yeah. So I would say definitely give it your backing because it's a World Cup year. So it's going to be a lot of content this summer. So, Michael, what are you looking forward to most this summer? Liverpool signing Lewandowski. Just kidding. I mean, I'm really just interested to see where Ousmane Dembele goes. That's like the most intriguing thing to me. I have no clue where what he's going to do. Is he going to stay at Barca and take a pay cut? Is he going to go to Chelsea? Will Liverpool even try? I don't think he's going to go to Liverpool. So I'm really intrigued by Ousmane Dembele's kind of transfer saga, and then also following my national team, Finland. So hopefully we qualify to League A and go into every home game, and hopefully we can win the home games because usually we do terrible and lose. So hopefully Saturday is a good start against Bosnia at home. But yeah, thanks for having me on, Ankit. And if you guys want to follow, I guess we're ending the stream here. If you guys want to follow me on YouTube, Michael Talks Football, I'm actually soon having a video out on Nottingham Forest's remarkable season and finally back in the Premier League after 23 years. And they have more Champions Leagues than Man City, Arsenal, Tottenham combined. And they did it back. Yeah, Actually, yeah. you know what? Ankit, funny, I'll spoil a little info about Nottingham Forest. 2 seasons before they won the Champions League, they were in the Championship. They won the Premier League the season they were promoted. Unbelievable. Wow. Absolutely crazy story what Brian Clough did in the late 70s for them. So that's something that will be in the video when I upload it sometime this week. Brilliant. So we'll obviously watch that, people. And again, we will see a lot of content on our channels as well as Michael. So hopefully you guys press that bell notification icon on both our channels as well. But till next time, take care and let's hope for the best game. See you at the watch along tonight on Almighty Sports Plus and on Michael Talks Football and Markaroni as well.